my privilege to introduce the Honorable Chief Election Commissioner, Shri Rajiv Kumar ji, the Honorable Election Commissioner, Shri Ganesh Kumar, and the Honorable Election Commissioner, Dr. Sukhbir Singh Sandhu. Also on the dais today are senior officials who have been a part of Team ECI in the past 2 years and have played a crucial role in the run-up to the general election. My privilege to introduce the Honorable Chief Election Commissioner, Shri Rajiv Kumar ji, the Honorable Election Commissioner, Shri Ganesh Kumar, and the Honorable Election Commissioner, Dr. Sukhbir Singh Sandhu. Also on the dais today are senior officials who have been a part of Team ECI in the past 2 years and have played a crucial role in the run-up to the general election. My privilege to introduce the Honorable Chief Election Commissioner, Shri Rajiv Kumar ji, the Honorable Election Commissioner, Shri Ganesh Kumar, and the Honorable Election Commissioner, Dr. Sukhbir Singh Sandhu. Also on the dais today are senior officials who have been a part of Team ECI in the past 2 years and have played a crucial role in the run-up to the general election. My privilege to introduce the Honorable Chief Election Commissioner, Shri Rajiv Kumar ji, the Honorable Election Commissioner, Shri Ganesh Kumar, and the Honorable Election Commissioner, Dr. Sukhbir Singh Sandhu. Also on the dais today are senior officials who have been a part of Team ECI in the past 2 years and have played a crucial role in the run-up to the general election. My privilege to introduce the Honorable Chief Election Commissioner, Shri Rajiv Kumar ji, the Honorable Election Commissioner, Shri Ganesh Kumar, and the Honorable Election Commissioner, Dr. Sukhbir Singh Sandhu. Also on the dais today are senior officials who have been a part of Team ECI in the past 2 years and have played a crucial role in the run-up to the general election. My privilege to introduce the Honorable Chief Election Commissioner, Shri Rajiv Kumar ji, the Honorable Election Commissioner, Shri Ganesh Kumar, and the Honorable Election Commissioner, Dr. Sukhbir Singh Sandhu. Also on the dais today are senior officials who have been a part of Team ECI in the past 2 years and have played a crucial role in the run-up to the across the date line. However, India's elections have been like a pole star, both for its quantity and quality, and I'll elaborate it in detail in this conference. दुनिया के सबसे बड़े और सबसे जीवंत लोकतंत्र के रूप में भारत पर सभी का ध्यान केंद्रित रहता है। जहां चुनाव एक त्योहार है जिसमें लोकतंत्र के रंग उभरते हैं और देश के सभी हिस्से उसमें समावेश होते हैं। चुनाव का पर्व देश का गर्व। Let me say in the very beginning that it is our promise to deliver a national election in a manner that we add to our global shine and remain a beacon for electoral democracies across the world. We are committed to give the nation a truly festive democratic environment. Friends, the term of 17th Lok Sabha is due to expire on 16th June 24. The term of legislative assemblies of Andhra Pradesh, Odisha, Arunachal, Sikkim are also due to expire in June 24. Jammu Kashmir Assembly में भी चुनाव ड्यू हैं। We in the Commission understand with humility at our command that every election is a new test and failure is not an option. All aspects of election management. The entire election machinery has been trained on all aspects of election management. I had myself personally interacted with over 800 district magistrates across the length and breadth of the country. SPs, DMs, we have interacted with the
SPs, political parties, DMs, enforcement agencies, commissioners, range in IGs, Delhi, political and also parties, while visiting enforcement the agencies states. in और Delhi states में इन and सबके also साथ while समीक्षा visiting करने के दौरान the states. उसके बाद और पूरी हमें ये स्टेट्स में इन विश्वास है सबके साथ समीक्षा कि करने हमें के दौरान यादगार, और उसके स्वतंत्र, बाद निष्पक्ष हमें ये विश्वास है चुनाव एक कि पर्व हम के एक रूप में यादगार, सबकी भागीदारी के स्वतंत्र, साथ सुनिश्चित कराएंगे। निष्पक्ष चुनाव एक पर्व के रूप में Before I सबकी भागीदारी share के the साथ schedule, सुनिश्चित कराएंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं बिफोर आई कि शेयर भौगोलिक, द शेड्यूल, सांस्कृतिक, सामाजिक मैं आपको रूप से बताना चाहता हूं विविध इतने बड़े कि देश में भौगोलिक, चुनाव कराने सांस्कृतिक, के लिए सामाजिक हमने अपने रूप आप को से कैसे विविध over the 2 years इतने बड़े period देश तैयार में किया। चुनाव कराने के लिए हमने अपने दुनिया आप के को सबसे बड़े लोकतंत्र कैसे के ओवर द चुनावों 2 में इयर्स पीरियड तैयार किया। लॉजिस्टिक्स और मटेरियल प्रबंधन दुनिया के सबसे बड़े ही अपने लोकतंत्र आप के में चुनावों में बहुत बड़ी चुनौती है। लॉजिस्टिक्स और मटेरियल प्रबंधन ही अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती चुनौती है। तो लेट अस शो यू व्हाट इज द 97 मैग्नीट्यूड बाय विच वी आर डूइंग दिस इलेक्शंस। More than We the have combined 97 voters crore of a registered few voters. continents put together. America, More than the Europe, combined voters of Australia, all many a few put together. continents put over together. America, 10.5 Europe, lakh polling stations. Australia, all many put together. And कितने लोग उसको Over conduct करते हैं? 10.5 lakh polling 1.5 stations. crore polling officials And कितने लोग उसको conduct करते हैं? those elections. 1.5 crore 55 polling lakh officials and 4 lakh security vehicles. officials conduct those और अब elections. तक हम क्या कर चुके हैं? More than 17 55 general lakh elections की EVMs, पार्लियामेंट। 4 lakh vehicles. 400 से और अब ज्यादा तक हम क्या कर assembly चुके हैं? elections कर 17 चुके हैं। जनरल इलेक्शंस ये की इलेक्शन पार्लियामेंट। कमीशन का एक लीगेसी है। 400 से ज्यादा 16 असेंबली presidential इलेक्शंस कर चुके हैं। 16 vice ये इलेक्शन presidential कमीशन का एक elections, लीगेसी है। truly gold standard. 16 presidential elections, 16 gold vice standard presidential in elections, the entire a truly election gold standard. management. It's a gold standard in the entire election There is a qualitative management. leapfrog Friends. which commission is ensuring. There is a which would be qualitative shown leapfrog by the which outcomes of commission the is 11 state elections which we have ensuring, held recently. which would be shown पिछले एक by सवा the साल के outcomes अंदर of में the 11 11 state elections state which we have held assemblies के recently. देश में हुए हैं। पिछले एक सवा साल के और अंदर आज में जो 11 हम इलेक्शंस नए स्टेट असेंबलीज 2024 के में जा रहे हैं तो देश इस में हुए दृढ़ता हैं। के साथ जा रहे हैं और कि आज जो उनके हम outcomes नए हैं वो जो आपको दिखा रहे हैं। 2024 में जा रहे हैं तो इस दृढ़ता के साथ जा रहे हैं वायलेंस कि जो उनके आउटकम्स हैं वो आपको जो दिखा रहे इसमें से हैं। एक दो स्टेट में वायलेंस होती वो थी, वहाँ पीसफुल भी हुए, violence नहीं। वायलेंस फ्री हुए। नियर जीरो जो इसमें से एक दो स्टेट में वायलेंस होती थी वहां भी वायलेंस जो नहीं। क्लटर है, जो नॉइज नियर जीरो जो रूपोल्स कैंपेन के दौरान होती है पॉलिटिकल और कैंपेनिंग जो क्लटर है, जो नॉइज है, जो कैंपेन के दौरान होती है पॉलिटिकल पार्टीज की, उसमें भी घटित देखने को हमारे मिली। ऊपर में होती थी वो कम हुई। कोर्ट केसेस रिड्यूस हुए, Seizures कोर्ट की बढ़े, टिप्पणियां और जो fake news अनावश्यक पर या एक हमारे ऊपर में होती थी वो action कम हुई। लेने का सीजर्स जो बढ़े तरीका था और वो फेक बहुत न्यूज पर एक last एक्शन 2 लेने years का में जो तरीका था वो और बहुत robust बड़ा। करने के लिए हमने क्या क्या किया है तो लास्ट 2 ये इयर्स हम में आपको आज दिखाएंगे इसको उसको और कैसे रोबस्ट बेहतर करने के करेंगे लिए ये हमने भी क्या क्या दिखाएंगे। किया है ये हम आपको आज दिखाएंगे हम कहाँ पहुंचना और उसको चाहते कैसे हैं, बेहतर करेंगे इस ये भी election को दिखाएंगे। किस तरीके से डिलीवर चलना चाहते हैं ये भी आपको हम last कहाँ slide में। पहुंचना चाहते हैं, इस इलेक्शन अभी को किस तरीके से जो डिलीवर electoral चलना cycle चाहते हैं है, ये भी आपको उसमें लास्ट हमने स्लाइड में कितनी दिखाएंगे। तैयारी की है ये हम आपको अभी आज शेड्यूल जो बताने से इलेक्ट्रल पहले साइकिल बताना है चाहते हैं। उसमें हमने कितनी तैयारी अगर की है देखा ये जाए हम तो इनपुट के आपको रूप में आज शेड्यूल हमारा बताने जो से पहले इलेक्ट्रल रोल बताना है वो चाहते हैं। प्योर होना चाहिए। अगर ये देखा जाए तो foundation है इनपुट के किसी रूप भी, में हमारा जो अच्छे इलेक्ट्रल चुनाव रोल है के वो लिए। प्योर होना चाहिए। उसमें ये जिसको होना फाउंडेशन चाहिए है voting किसी में वो भी है और जिसको नहीं होना अच्छे चाहिए चुनाव वो के नहीं है। लिए। हमने उसमें जिसको electoral होना roll चाहिए पे बहुत वोटिंग में मेहनत वो की है और जिसको नहीं होना उसके चाहिए दौर वो में नहीं है। मटेरियल, मैन पावर, हमने टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रल रोल में इतनी बहुत चीजें मेहनत की है। इनपुट के Process तौर में के रूप मटेरियल, में मैन पावर, जो टेक्नोलॉजी, disruptive ट्रेनिंग challenges इतनी हैं, चीजें muscle लगती power, हैं। money power, प्रोसेस के रूप में MCC जो violation डिसरप्टिव चैलेंजेस और हैं, reaching मसल out to पावर, the मनी missing पावर, voters, मिस urban इन्फॉर्मेशन, apathy, youth apathy, एमसीसी वायलेशन और और रीचिंग आउट टू द operational मिसिंग challenges वोटर्स, जिसमें अर्बन अपैथी, reaching in यूथ inaccessible अपैथी areas in this और ओवरकमिंग ऑपरेशनल चैलेंजेस जिसमें and what रीचिंग outcomes इन we want, इनएक्सेसिबल एरियाज that इन is दिस what is, पहला जो लिटिल एक लेटर मोज़ेक आल्सो। है जो देश की तो voters पहला की जो इनपुट electors है की पिक्चर है। ये एक मोज़ेक है क्या जो दिखाती देश है की ये? वोटर्स की It's a very इलेक्टर्स की diverse पिक्चर है। mosaic. क्या दिखाती है ये? 96.8 crores are It's a the very total diverse electors in the mosaic. country. 96.8 crores are the 49.7 total crore are electors in male the and country, 47.1 of crore are which female. 49.7 और जो crore are young male voters and हैं, बहुत मेहनत की 47.1 हमने crore are पिछले साल female. में। वो और जो यंग वोटर्स हैं 1.82 करोड़ बहुत first मेहनत time की हमने voters पिछले साल इस में। बार इन चुनावों वो में वोट देने के लिए 1.82 हमारे करोड़ electoral फर्स्ट rolls में टाइम हैं। वोटर्स इस बार और अगर इन चुनावों में इसको हम वोट देने के लिए 20 से 29 हमारे साल के इलेक्टोरल वर्ष रोल्स में देखें, हैं। वो भी तो यंग ही हैं, और अगर कोई अभी बड़े इसको तो हुए हम नहीं हैं। 20 से 29 साल 18 के से वर्ष जो में देखें, वो भी 29 तो हैं, यंग ही हैं, वो करीब कोई अभी बड़े तो हुए नहीं हैं।
तो 18 से जो 29 हैं 19 वो करीब और 20 साढ़े से 21 लाख वोटर हैं। 19 1 करोड़ 80 लाख 18 से 19 और 20 से 29 में 19.74 करोड़, यानी साढ़े 21 करोड़ वोटर्स एब्सोल्युटली जो कि डेमोक्रेसी में भाग लेंगे और अपना फ्यूचर अपने से डिसाइड करेंगे, बिकॉज दे आर द बिगेस्ट स्टेक होल्डर्स इन द डेमोक्रेसी, बिकॉज दे हैव ए लार्जर टाइम टू कंट्रीब्यूट इन द सोसाइटी। अगर हम देखें तो बहुत इंक्लूसिव करने के लिए देयर आर 88.4 लाख पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज हु आर पार्ट ऑफ आवर वोटर लिस्ट। वी हैव मेड ए स्पेशल एफर्ट कि जितने हमारे मतदाता हैं उस तरह के उनको हम अपने इलेक्टोरल रोल में लेके आए। 82 लाख लोग ऐसे हैं जो 85 वर्ष से ऊपर हैं, तो वो हमारे प्राउड मतदाता हैं। वी फील वेरी प्राउड टू हैव देम विद अस। पर उसमें से 2,18,000 लोग देश में 100 वर्ष से अधिक के मतदाता भी हैं जो हमारे इलेक्टोरल में। सो द मोज़ेक इज ट्रांसजेंडर्स भी हैं 48,000। तो मोज़ेक इज लाइक 18 से 19, 20 से 28, 85 transgenders, person with disabilities, and in the entire country, length and breadth of the country. इस रिग्रेस जो प्रोसीजर है, इसको बनाने में कितनी मेहनत लगती है, हर स्टेज पे ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि हर स्टेज पे इलेक्टोरल रोल के प्रिपरेशन करते समय पॉलिटिकल पार्टीज को इन्वॉल्व किया जाता है, ताकि कोई हमसे ये ना प्रश्न कहे कि आपने अपने से इलेक्टोरल रोल बनाया और हमें बताया भी नहीं। सो when the electoral roll preparation starts, we make a draft publication. We give 2 copies free of cost to the political parties. उसके बाद जितने फॉर्म 6, फॉर्म 7, फॉर्म 8 नया नाम जुड़ने के, डिलीशन के, मॉडिफिकेशन के, मेरा नाम पदघर बदल गया, वो सब की कॉपी हम शेयर करते हैं, उसके मिनट्स बनाते हैं। और इस बार हमने और जोर दिया कि बूथ लेवल एजेंट्स अगर पॉलिटिकल पार्टी हमारे BLOs के साथ लगाना चाहें तो लगाएं। और अक्रॉस द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द कंट्री, ऑल द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स, we are absolutely confident that silently we were working. सबने पॉलिटिकल पार्टीज के साथ में हर डिस्ट्रिक्ट में कम से कम 1, 2, 3 मीटिंग्स की हैं, उनको सारे ड्राफ्ट रोल्स दिखाए हैं, दिखाने के बाद जितने ऑब्जेक्शंस हैं वो उनको पूरा किया है और उसके मिनट्स बना के रखे हैं। फ्रेंड्स, वी आर वेरी कॉन्फिडेंट दैट एंड वी आर कॉन्शियस दैट ए वेरी सॉलिड इलेक्टोरल रोल इज द फाउंडेशन स्टोन ऑन एनी इलेक्शन एंड वी आर रेडी टू गो विद दिस। We have also worked on the women voters. Women voters का जो जेंडर रेशियो है वो बढ़ के अब 948 हो गया, which is again a very healthy sign of women participation increasing in our electoral cycle. राज्य, देश के 12 राज्य ऐसे हैं जहां आज 1000 से ऊपर जेंडर रेशियो है, यानी महिला वोटर्स की संख्या मेल से ज्यादा है। और जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि 1.89 नए वोटर्स हमने जुड़े हैं, उनमें से 18 से 19 में 85 लाख हमारी लड़कियां हैं, फीमेल वोटर्स हैं। सो दे आर गोइंग साइड बाय साइड एंड दिस इज अगेन ए वेरी हेल्दी साइन that women are also equally participating in our election. और जैसे women participation है, ऐसे ही youth participation is another area which the commission is very conscious and commission is also consistently focusing on. 13 से जो 1.8 करोड़ मैंने आपको बताया, 19 करोड़ वोटर्स 20 से 19 और जिस किसी Come and meet IED. Join the open days. A week for get to know our school, enter the classrooms, meet our teachers. 18 साल नहीं हुई थी, उसका भी नाम हमने एडवांस में एप्लीकेशन में लिया, जो 2024 के किसी भी समय में जिनकी उम्र 18 साल होने वाली है। एंड यू वुड बी हैप्पी टू नोट दैट आउट ऑफ 13.4 lakh एडवांस एप्लीकेशंस व्हिच हैव कम टू अस, अराउंड 5 to 6 lakhs are such who will complete the age of 18 by 1st of April 2024. और वो भी हमारे वोटर उस समय तक बन जाएंगे, यानी the role would be as much updated on 1st of April कि कोई भी छूटे नहीं। नेशनल आइकन्स को बड़ी संख्या में हमने यूथ को अपने साथ जोड़ने के लिए इस कार्य में लगाया है। हमें विश्वास है कि यूथ
न सिर्फ जो वोट करेंगे influencers हैं वो भी हमारे साथ बल्कि जुड़ेंगे। हमारे एम्बेसडर्स भी बनेंगे। वो अपने साथ यूथ जो एक के साथ influencers हैं अपने वो 10 भी हमारे दोस्तों को साथ भी लेके जुड़ेंगे। आएंगे। और इस वो बार अपने साथ हम देख यूथ हम एक के साथ convinced हैं 10 अपने दोस्तों को भी लेके different, आएंगे। और इस बार outreach activities हम की वजह से हम कि कन्विंस्ड वो हैं अपने हमारे साथ ज़्यादा से ज़्यादा डिफरेंट जुड़ेंगे। आउटरीच Friends, जब हम एक्टिविटीज की वजह voters से को अपने बूथ कि पे वो बुला रहे हैं, हमारे साथ ज्यादा से ज्यादा हमारी ये भी जुड़ेंगे। ड्यूटी बनती है कि हम अपने फ्रेंड्स, बूथ जब को हम बहुत अच्छे वोटर्स से को उनके अपने लिए बूथ तैयार पे करके बुला रहे हैं तो हमारी ये कैसे भी तैयार ड्यूटी करें? बनती है कि हम अपने बूथ हर को बूथ बहुत पे अच्छे से पीने का उनके लिए पानी तैयार होगा। करके रखें। टॉयलेट होगा, कैसे मेल तैयार एंड करें? फीमेल अलग, हर बूथ पे साइनेज पीने का होगा, पानी होगा, पर्सन्स विद टॉयलेट डिसेबिलिटी होगा, के लिए रैंप मेल एंड होगा, फीमेल अलग, एक साइनेज होगा, हेल्प डेस्क पर्सन्स विद डिसेबिलिटी के लिए रैंप होगा, एक और व्हील चेयर होगी, शेड भी होगा, हेल्प डेस्क sufficient होगी, light वोटर भी होगा। फैसिलिटेशन सेंटर होगा यानी मिनिमम और बेसिक फैसिलिटी शेड भी होगा, सफिशिएंट लाइट भी होगी। ऑल द पोलिंग स्टेशन यानी मिनिमम बेसिक फैसिलिटीज वुड these बी polling अवेलेबल stations एट ऑल द पोलिंग स्टेशंस और these polling stations will be set up या दक्षिण में across the length and कन्याकुमारी का breadth. समुद्र तक, उत्तर में हिमालय की बर्फीली पश्चिम में चोटियां हों राजस्थान के रेगिस्तान या से दक्षिण लेके में कन्याकुमारी का अरुणाचल के समुद्र जंगल तक, और मेघालय पश्चिम में के राजस्थान wettest के region, रेगिस्तान से लेके इलेक्शन कमीशन अरुणाचल के जंगल देश के हर कोने और में मेघालय के प्रजातंत्र को वेटेस्ट मजबूत रीजन बनाने के लिए इलेक्शन अपने कमीशन polling station देश अपने के हर personnel कोने को में लेके जाएगा प्रजातंत्र को and we मजबूत will take बनाने के लिए democracy अपने every पोलिंग corner स्टेशन of the अपने country. पर्सनल को लेके And जाएगा we एंड वी are विल sure टेक that we would डेमोक्रेसी make it a very एवरी overwhelming कॉर्नर ऑफ द कंट्री experience for our and voters. we are sure Then that we would make it a very the overwhelming voters' experience delight. for our voters. पोलिंग स्टेशन इस तरीके के And मिलने then चाहिए जिसमें the ये voters' सभी delight. चीजें आपको मिले। पोलिंग स्टेशन इस Then तरीके के how मिलने would we चाहिए ensure जिसमें that ये सभी it is चीजें also आपको मिले। inclusive? Then Inclusive in the how would we sense ensure that 85+ जितने it is voters also हैं, उनके हम घर inclusive? जाके वोट लेने के लिए इंक्लूसिव इन द सेंस 85 Nomination से प्लस पहले जितने वोटर्स हैं उनके सबके हम घर घर में जाके वोट लेने हम के लिए फॉर्म तैयार हैं। 12D पहुंचाएंगे। नॉमिनेशन से पहले देश के कुछ हिस्से सबके घर में घर से हम वोटिंग फॉर्म हो चुकी है 12D असेंबली पहुंचाएंगे। इलेक्शंस में, कुछ राज्यों देश में के अभी कुछ नहीं हिस्से में अब घर इस से बार वोटिंग पूरे हो देश चुकी में है पहली असेंबली बार ये इलेक्शंस में, व्यवस्था कुछ एक राज्यों में साथ अभी लागू नहीं हुई हुई है। कि जो अब इस बार 85 पूरे वर्ष देश से में ऊपर पहली के बार ये मतदाता व्यवस्था एक साथ लागू जो होगी persons with कि disability जो हैं, 85 40 वर्ष years से ऊपर and के 40% मतदाता हैं, से ज्यादा की जो पर्सन्स विद डिसेबिलिटी जिनको हैं disability 40 है, इयर्स वो एंड सब 40% के से पास हम ज़्यादा फॉर्म की पहुंचाएंगे। अगर वो ये जिनको opt डिसेबिलिटी करेंगे है कि वो वो सब वो के पास हम वो, फॉर्म पहुंचाएंगे। बूथ पर नहीं अगर आना वो चाहते, ये घर ऑप्ट से करना करेंगे चाहते, तो कि हम वो घर में फॉर्म जाएंगे, एक आदमी का वोट लेने घर में बूथ जाएंगे। पर नहीं आना चाहते, घर से हालांकि करना हमारा चाहते हैं तजुर्बा तो हम ये घर है में कि जाएंगे, ज्यादातर एक लोग आदमी का उस वोट एज लेने के घर में बूथ पर जाएंगे। आना चाहते हैं because they have हालांकि हमारा consistently been तजुर्बा part of यह है our- कि ज्यादातर part लोग of our, उस एज के बूथ पर आना चाहते हैं बिकॉज दे हैव democracy. कंसिस्टेंटली बीन पार्ट ऑफ आवर उनको वॉलंटियर्स और व्हीलचेयर की सुविधा वहाँ उपलब्ध है। डेमोक्रेसी। नाउ जब ये उनको बूथ बनाए, वॉलंटियर्स और व्हीलचेयर की तो सुविधा हमने वहाँ अपने उपलब्ध पर्सनल रहेगी। को जो नाउ टीम्स हैं जब ये बूथ उनको बनाए बहुत अच्छे से ट्रेन करके तो हमने तैयार अपने किया। पर्सनल They are को sentinels जो of democracy. टीम्स हैं उनको I mean, बहुत अच्छे से हमारे ट्रेन जितने करके तैयार employees हैं, किया। वो सब दे आर तैयार सेंटिनल्स ऑफ रहेंगे डेमोक्रेसी। इस बात के लिए आई मीन कि that हमारे जितने एम्प्लॉयज हैं वो wherever सब it तैयार takes, रहेंगे इस they बात will के लिए walk an extra कि mile दैट so that voters don't have to. वेयर एवर इट टेक्स पहाड़ के they बर्फ will में भी walk जाएंगे, an extra mile जंगल में भी so that जाएंगे, voters नदी में भी don't have to जाएंगे, mile. घोड़े पर भी जाएंगे, पहाड़ के काठ बर्फ में भी ब्रिज पर जाएंगे, हेलीकॉप्टर जंगल से में भी जाएंगे, नदी में भी हाथी से जाएंगे, घोड़े पर भी जाएंगे, बर्फ में भी काठ के चलेंगे, ब्रिज पर म्यूल भी से भी जाएंगे, जाएंगे। हेलीकॉप्टर से भी जाएंगे, सिर्फ हाथी से भी हर जाएंगे, जगह पहुंचेंगे बर्फ इसलिए में भी ताकि चलेंगे, म्यूल voters से भी अपना जाएंगे। वोट दे सकें। सिर्फ मैं इसी हर जगह इसी क्रम पहुंचेंगे में इसलिए आगे थोड़ी ताकि urban वोटर apathy की अपना भी वोट बात दे करूंगा। सकें। हम इतनी मैं जब मेहनत करते हैं इसी जाने क्रम में हम आगे देखते थोड़ी हैं जहाँ अर्बन घर के अपैथी की नीचे भी बूथ बात है, करूंगा। वहाँ पे बहुत सारे हम लोग इतनी वोट जब देते मेहनत हैं। करते हैं जाने में ये हम उनके देखते लिए हैं भी जहाँ एक, घर के नीचे बूथ है उदाहरण है वहाँ पे बहुत सारे लोग वोट कि वो देने ये नहीं आते। समझें कि वोट देना कितना ये जरूरी उनके है। लिए भी एक अगर हम 10 उदाहरण लोगों के है लिए 5 लोगों के लिए कि वो ये बूथ बना समझें के कि उतनी वोट मेहनत देना से जा कितना सकते हैं, जरूरी तो है। आप घर के नीचे उतर अगर हम 10 लोगों के 2 लिए किलोमीटर 5 के लोगों के लिए रेडियस बूथ में बना आपके के पास इतनी बूथ मेहनत है, से जा सकते हैं उसमें तो वोट आप घर देने के नीचे उतर जरूर के आएं। जो 2 किलोमीटर के Friends, रेडियस में we आपके are पास also बूथ very है conscious उसमें वोट देने about the जरूर sustainable आए। elections. फ्रेंड्स As our- वी आर as our ऑल्सो वेरी responsibility कॉन्शियस towards the अबाउट द environment. सस्टेनेबल इलेक्शंस तो as environmentally our sustainable elections responsibility हो, towards the इसके लिए भी environment. हमने तो सुझाव, इसके लिए भी हमने एनवायरमेंटली directions सस्टेनेबल अपने इलेक्शंस हों election machinery इसके को लिए दी भी है। हमने सुझाव, Waste इसके लिए भी हमने management किसी भी डायरेक्शंस polling station अपने पे polling इलेक्शन के बाद मशीनरी में को दी दिखाई है।
नहीं देना चाहिए। वेस्ट आप उसको मैनेजमेंट collect किसी करें, भी पोलिंग उधर स्टेशन करें पे और teams पोलिंग के के साथ बाद में में दिखाई नहीं देना send them to various चाहिए। disposal. आप उसको I think it's कलेक्ट part करें, of the डिस्पोजल करें और material, टीम्स के साथ में arrangement. सेंड देम टू वेरियस डिस्पोजल थिंग। इट्स पार्ट ऑफ Minimal द use paper का मटेरियल मैक्सिमम हमारी अरेंजमेंट। ई बुक्स लागू हैं, आप कभी भी मिनिमल हमारी यूज पेपर website का पे करें, देख सकते हैं। हर मैक्सिमम subject पर हमारी e-book है। ई बुक्स लागू More हैं, and आप more कभी भी कार्बन हमारी वेबसाइट पे देख सकते हैं। हर footprints को हम सब्जेक्ट पर कम ई से बुक है। कम किस तरह से कर मोर सकते एंड हैं। मोर Recycling, कार्बन more and more, फुटप्रिंट्स less and को less हम कम से paperwork, कम किस तरह से all कर that सकते हैं। is रिसाइकलिंग, what is our मोर एंड commitment मोर to लेस एंड लेस the पेपर वर्क, ऑल दैट
We are is also what is our greatly commitment to leveraging the technology environment. in three We are verticals also for the help of greatly the voter, leveraging for the technology help of the election in management three agencies, verticals for the help of the machinery, voter, and also for the help for of the election the management political agencies, parties and candidates. machinery, कोई भी and वोटर also पूरे for देश में the political उसका एपिक parties नंबर and से candidates. बूथ कहाँ है, कोई भी वोटर उसका पूरे देश में एपिक उसका डाउनलोड एपिक करना नंबर है, से if he has a बूथ कहाँ mobile है, number seeded, उसका he can download एपिक his डाउनलोड or her करना है. mobile. इफ ही हैज ए कोई मोबाइल भी नंबर सीडेड, BLO के ही बारे कैन में कोई डाउनलोड जानकारी लेनी है, one हिज can और go हर to the मोबाइल. voter helpline app. कोई भी You can बीएलओ know के बारे में about कोई जानकारी what लेनी kind है, of a वन कैन गो टू द candidate you वोटर have in हेल्पलाइन. your constituency who are You contesting. can know So about there is an what application kind of a called Know Your candidate you Candidate. have in your constituency तो who उस are कैंडिडेट contesting. की कोई So क्रिमिनल there is an बैकग्राउंड तो application नहीं है, called Know Your Candidate. उसके खिलाफ में केसेस तो तो नहीं उस है, कैंडिडेट की कोई उनके क्या क्रिमिनल assets बैकग्राउंड तो हैं, नहीं क्या है, लायबिलिटीज हैं, उसके खिलाफ ये में सारी केसेस तो नहीं है, चीजें, उनके क्या ये असेट्स सारी हैं, चीजें क्या लायबिलिटीज हैं, KYC के ये application सारी में चीजें, voters को देखने का अधिकार है ये उनको सारी मिलेंगी। चीजें और केवाईसी जिस किसी के का भी criminal record एप्लीकेशन है, में वोटर्स किसी को भी देखने का candidate अधिकार है, उनको उसको मिलेंगी. 3 बार और जिस किसी newspapers का भी में देना क्रिमिनल पड़ेगा, रिकॉर्ड है TV किसी में भी देना कैंडिडेट पड़ेगा, का, और उसको political party 3 को बार भी ये बताना न्यूज़पेपर्स पड़ेगा में देना पड़ेगा, कि आपको टीवी में देना पड़ेगा, और उस पॉलिटिकल पार्टी constituency को भी में ये बताना पड़ेगा क्रिमिनल कैंडिडेट कि बैकग्राउंड आपको के खड़ा करना पड़ा, तो बाकी क्यों उस नहीं कॉन्स्टिट्यूएंसी मिला? आप में बताइए व्हाट इज द बेसिस क्रिमिनल ऑफ कैंडिडेट बैकग्राउंड के खड़ा करना selection पड़ा, of a तो बाकी candidate क्यों who has a नहीं मिला? criminal background. आप बताइए व्हाट इज द बेसिस Then, ऑफ द in order to selection of clean a up the candidate entire who has a system, criminal background. we want to use the technology. with In the order help to of the clean up the citizens. entire system, we Citizens, want to be use the please, technology vigilant. with the help of the C-Vigil ऐप citizens. में कोई भी Citizens, be शिकायत अगर please किसी citizens vigilant. को किसी वोटर को So करनी सी है, विजिल ऐप में कहीं पर कोई भी शिकायत कहीं अगर पर भी किसी कोई, सिटीजन्स को किसी वोटर को करनी पैसा है, बांटने का केस है, फ्री कहीं बी पर बांटने भी का केस है, कहीं एक्सेस पर भी कैंपेनिंग का कोई केस है, पैसा Just बांटने का केस है, फ्री take भी a बांटने photo, का केस है, type एक्सेस text, कैंपेनिंग का send it केस to है, us. We जस्ट will capture your टेक ए फोटो, longitude and latitude टाइप ourselves. टेक्स्ट, सेंड आप इट टू कहाँ पर अस, खड़े हैं ये हम अपने वी से विल आपकी मोबाइल की कैप्चर लोकेशन योर से लॉन्गिट्यूड एंड समझ लैटिट्यूड और आपको 100 आवर. मिनट के आप अंदर कहाँ पर अपनी खड़े हैं ये हम जो अपने से आपकी मोबाइल की आपकी लोकेशन से समझ लेंगे, शिकायत है उसका और निराकरण आपको 100 मिनट हम के आपको अंदर करने अपनी देंगे। टीम भेजकर जो Friends, आपकी शिकायत है इस उसका सारी चीज को निराकरण करने में हम आपको हमारे करने सामने देंगे. कुछ चैलेंजेस भी हैं। फ्रेंड्स, मैं आज आपके सामने इस उन सारी challenges चीज की को भी करने चर्चा में करना चाहता हूं। हमारे सामने कुछ और ये भी चैलेंजेस बताना भी चाहता हैं. हूं कि इसको हम मैं आज आपके सामने उन कैसे चैलेंजेस ठीक की भी चर्चा करना चाहता हूं, करें। तो और मेनली ये भी 4 बताना चाहता challenges हूं कि हमारे इसको पास हम हैं, 4 M's, कैसे ठीक करेंगे. मसिल, तो money, मेनली 4 चैलेंजेस हमारे पास हैं, 4 misinformation and एम्स: MCC violations। मसिल, Essentially 4 मनी, किस्म के broad मिसइंफॉर्मेशन जो हमारे एंड process एमसीसी हैं। और वायलेशंस. इसी के एसेंशियली संदर्भ में 4 पूरा जो किस्म के process अब ब्रॉड आज से जो शुरू हमारे होगा, प्रोसेस हैं, और जब तक और चुनाव इसी खत्म होगा, इसी के तो संदर्भ इलेक्शन में कमीशन का पूरा जो अधिकांश प्रोसेस समय अब आज से इन्हीं शुरू 4 होगा, चीजों में लगने और वाला है जब कि तक how चुनाव to खत्म control होगा, muscle power, how तो to इलेक्शन control कमीशन money का power, अधिकांश समय how to इन्हीं 4 control चीजों में the लगने वाला है कि हाउ टू menace of कंट्रोल मसिल पावर, हाउ टू misinformation कंट्रोल मनी and how पावर, to control हाउ टू the कंट्रोल द violations which are menace of misinformation, or at and least how to be to done control under the MCC. violations which are So coming to the done muscle, or at least to be done under Muscle, MCC. So coming power to को the control muscle, करने के लिए muscle adequate number of CAPF पावर को would be कंट्रोल करने के लिए 24/7 adequate एक number नया of प्रयोग हम इस CAPF बार would be कर रहे हैं। deployed. We are establishing 24/7 एक नया determined हैं प्रयोग हम इस बार muscle कर रहे power को हैं. कम करने के। वी आर एस्टेब्लिशिंग, हम बिल्कुल डिटरमिन्ड हैं इस बार मसल पावर को कम हिंसा करना. का कोई स्थान होना नहीं चाहिए। चुनावों में ब्लड बात हिंसा का कोई स्थान होना नहीं चाहिए, जहां भी और हिंसा ब्लड बची है, बात बिल्कुल नहीं होना चाहे चाहिए. वो प्री पोल हो, चाहे वो ड्यूरिंग कैंपेनिंग जहां हो, भी चाहे वो पोस्ट हिंसा बची है, वी आर कमिटेड, चाहे वो प्री पोल हो, चाहे वो ड्यूरिंग कैंपेनिंग हो, चाहे वो पोस्ट पोल टू हो, दिस सिचुएशन। वी आर और कमिटेड टू जो भी हमें काइंड ऑफ सख्ती बी से करना वेरी वेरी होगा, अलाइव इसके लिए टू हम दिस करेंगे सिचुएशन. ताकि और ये प्रोविजन जो ना भी रहे। हमें सख्ती से करना हर होगा, डिस्ट्रिक्ट में इसके लिए हम करेंगे कंट्रोल ताकि रूम बनाया गया है, जो दिन ये उसमें प्रोविजन 5 ना किस्म रहे. के फीड्स होंगे। हर डिस्ट्रिक्ट में टीवी, एक कंट्रोल रूम बनाया गया है जो सोशल दिन मीडिया, उसमें 5 किस्म के फीड्स वेबकास्टिंग होंगे. व्हिच इज ऑन द बूथ्स, टीवी, 1950 सोशल मीडिया, की वेबकास्टिंग विच इज ऑन दी 9 बूथ्स, जिससे शिकायत आती है, 1950 की लाइन जिससे शिकायत आती है, सीनियर एंड ऑफिसर वुड बी अवेलेबल grievances इन द portal. कंट्रोल रूम्स इन एवरी So, डिस्ट्रिक्ट टू लुक एट one senior officer would be available जहां in से the भी, control और rooms in C-Vigil, every 60 district to C-Vigil, look at these 5 जहां से feeds. भी कोई शिकायत मिलेगी, जहां से भी, उस पर और सी सख्त विजिल, कार्रवाई। 60 सी विजिल, एवरीवेयर जहां से भी कोई शिकायत मिलेगी उस पर हमने सख्त बड़ी कार्रवाई सख्त ताकीद दी की. है। एवरीवेयर अक्रॉस द कंट्री एसएसपी
एसएसपीज अपने हमने बड़ी एरिया सख्त में ताकीद दी है हिंसा को कि ना डिस्ट्रिक्ट होने मजिस्ट्रेट्स एसएसपीज अ, अपने एरिया जितने में नॉन हिंसा अवेलेबल को ना वारंट्स आज होने की डेट में हैं अ, पुलिस उनको जितने already नॉन अवेलेबल हमारे वारंट्स विजिट्स आज के की डेट में साथ-साथ हैं ऑलमोस्ट एग्जीक्यूट पुलिस कर उनको कर चुकी है, कर रही ऑलरेडी है।
हमारे विजिट्स के साथ साथ ऑलमोस्ट एग्जीक्यूट कर चुकी है, कर रही है। साथ ही जितने हिस्ट्री शीटर्स हैं उनको भी बहुत तेजी से देखी है। देयर इज ऑल्सो ए नेटवर्क ऑफ चेक पोस्ट विच हैव बीन सेट अप इन द इंटरनेशनल बॉर्डर, in the interstate border, and on the nodes from where some kinds of irregular illegal goods can move across these states. In some international borders, there is also a drone based checking which will happen. We are fully committed that हिंसा का कहीं कोई उपयोग नहीं होना चाहिए। हमने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स को बहुत सख्त हिदायत दी है कि जितने लोग 3 साल से ऊपर हैं उन सबको आप बदल दीजिए पहले, और अकाउंटेबिलिटी स्टार्ट्स फ्रॉम द हेड ऑफ द डिस्ट्रिक्ट नॉट बिलो। ये उनका काम है कि जो नीचे हैं वो उनको देखें। स्टेट ने लगाए वो इस्तेमाल नहीं, किसी भी प्रोसेस में वॉलंटियर्स और कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ किसी भी स्टेट ने लगाए वो इस्तेमाल नहीं होंगे। बहुत सारी स्टेट्स ने टेम्परेरी वॉलंटियर्स और कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ को लगा के रखा है, वो किसी भी स्टेज में इस्तेमाल नहीं होंगे। बहुत सख्त डबल वोटिंग इम्पर्सोनेशन की भी शिकायत आती है। आरपी एक्ट की सेक्शन में बहुत सख्त हिदायत दी गई है कि अगर इम्पर्सोनेशन के केसेस आए तो आरपी एक्ट की सेक्शन में उनके खिलाफ एक्शन लें। बहुत ही डिटर्मिनेशन के साथ हम हिंसा मुक्त चुनाव देना चाहते हैं। चुनाव में हिंसा की कतई गुंजाइश, बहुत ही डिटर्मिनेशन के साथ हम हिंसा मुक्त चुनाव देना चाहते हैं। चुनाव में हिंसा की कतई गुंजाइश, हिंसा का विरोध करता हूँ। राष्ट्रपति महात्मा गांधी जी ने कहा था समाधान मैं हिंसा का विरोध करता हूँ क्योंकि उससे पाया हुआ समाधान बहुत कम वक्त के लिए होता है और उससे पैदा हुई नफरत हमेशा के लिए। ओनली पीस इज एवरलास्टिंग, वायलेंस डजंट सॉल्व एनीथिंग। We will request everyone, all political parties, all candidates, that they must be very cautious of this point. We'll be ruthless if anywhere the violence happens. Similarly, coming to the money, आप जानते हैं मैंने पहले भी आपको दिखाया है कि पिछले जो 11 इलेक्शंस हुए स्टेट में, राज्यों में, और उसी की वजह से ये कन्विक्शन है जिससे हम आपसे उसके बारे में बात कर रहे हैं। We are talking to you from the strength of our outcomes. कैश मूवमेंट को रेस्ट्रिक्ट किया गया 3400 करोड़ रुपए के करीब का कैश मूवमेंट को रेस्ट्रिक्ट किया गया 11 इलेक्शन में। एवरी स्टेट, राजस्थान, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, नागालैंड, गुजरात, हिमाचल, मिजोरम, त्रिपुरा, छत्तीसगढ़, हर स्टेट में उससे पहले इलेक्शन में जो भी हुआ था उससे 200, 400, 500, 700% की वृद्धि हुई। ये जो टोटल 3400 करोड़ इज अराउंड 835% हायर। धन का उपयोग है, ये जो धन बल का जो उपयोग है, कुछ राज्यों में ज्यादा है। जो धन का उपयोग है, जैसे बल का उपयोग कुछ राज्यों में ज्यादा है, ऐसे धन का उपयोग भी कुछ राज्यों में ज्यादा है। हम इस बात से भी बहुत वाकिफ है। वी आर अवेयर fully that there are differential vulnerabilities in each state. Some states have more violence, some states have more money, some states are more kind of a geographical problems. So whichever problem pertains to a particular state, based on this differential analysis, we would be having a differential level of treatment for that state. इसके लिए भी हमने misuse of money हम नहीं होने देंगे। इसके इसके लिए भी हमने enforcement agencies को, सब स्टेट्स में enforcement agencies के साथ बैठक की है। दिल्ली में हम सब हेड्स ऑफ द एजेंसीज के साथ फिर से बैठक करने वाले हैं आज के बाद तुरंत। क्या कहा है उनको हमने कहा है कि जो फ्रीबीज, लीकर, कैश, कुकर, साड़ी, मशीन, whatever kind of freebies किस किस स्टेट में बंटने की शिकायतें आती हैं उसको 100% रोकें। रोकने के लिए एनालिटिक्स बेस्ड कार्य करें। So whom have we directed? GST, excise, state police, all agencies, income tax, customs, coast guards, BSF, SSB, बॉर्डर से जहां से भी जिसके नारकोटिक्स और जहां से भी फ्री भी आने की संभावना हो सकती है, जीएसटी वुड बी डूइंग द ई-वे बिल बेस्ड एनालिटिक्स टू सी इफ देयर इज ए ट्रेंड ऑफ स्पट इन द डिमांड फॉर द एफएमसीजी इन सर्टेन एरियाज।
Banks would look at if there is a demand, spurt in demand of the cash in the NPCIL chests. will look at if there is a So, spurt in demand for the National payments from the wallets. NPCIL will look Digital at if there is a payments से तो spurt पैसा in नहीं जा रहा है, demand एक दो for state में ऐसा the भी देखने में payments आया from the कि wallets. आप डिजिटल अपने पेमेंट से तो wallet के पैसा through नहीं जा रहा है, एक दो किसी को स्टेट में भी ऐसा भी पैसे देखने में transfer आया करते था रहिए, कि आप 2000 अपने all that वैलेट we के will be थ्रू looking at. किसी को भी Banks पैसे would be ट्रांसफर करते sending रहिए 2,000 1,000 रुपए. almost All that daily we will be report looking at. of Banks would be the sending suspicious transactions which they have. almost daily All report airports in of the country the would be suspicious checked transactions which they have. regularly. All by the airports in the dedicated country teams of income tax would be for checked any kind of regularly movement through- by the through- dedicated through the teams of airstrips. income tax और for जहां जिन राज्यों any में kind of air movement strips commercial के अतिरिक्त हैं, through the जहां air strips. हेलीकॉप्टर्स लैंड कर सकते और जहां जिन राज्यों में एयर स्ट्रिप्स कमर्शियल के अतिरिक्त हैं, Bureau of जहां Civil हेलीकॉप्टर्स Aviation of लैंड कर Security सकते हैं, to we have issue asked and we have got detailed actually instructions. the Bureau of Civil जिस Aviation of किसी क्षेत्र में Security हेलीकॉप्टर to issue या chartered detailed flight instructions उतरेगी, कि जिस वहाँ किसी क्षेत्र जो में भी सामान उसके हेलीकॉप्टर अंदर में या उसकी चार्टर्ड फ्लाइट as per the उतरेगी, directions, as per the, वहाँ जो भी instructions सामान and उसके अंदर guidelines में of the उसकी BCS, as per almost the equal to directions, the, as per the commercial instructions and airports. guidelines of the BCS, Railways, almost equal to the RPF, GRP, commercial both airports will be checking simultaneously out. continuously Railways, RPF, Roads. GRP, So, both will be cash simultaneously or money continuously जो भी looking at. धन बल का Roads. उपयोग करना चाहेंगे, So, political finance, cash or in money any case जो भी is a thing which is in news these days. So this is our is a effort is a to thing which is add in news to these that, days. So this is thing our so that effort to much more add to cleaner that elections. thing so that Coming to the third there are M, much more which cleaner is the elections. misinformation. Coming This to also the troubles third us a lot M, which is the misinformation. While we are This conscious also troubles of us a two lot facts, during that the elections. While we are conscious social media of helps two us facts, in taking out that our outreach programs. जितना हम the social media helps us in youth, women, taking voters out our को outreach programs. अपने पास लाने जितना की हम कोशिश करते हैं उस माध्यम को use youth, women, voters को We are also conscious पास लाने की that on social media, in democracy, there is a full freedom to criticize anybody, including criticizing us. Why not? If we are doing wrong, criticize us. But be allowed to create fake news which is not based on facts, because it can disturb the public order. is not based on ये facts. अफवाहें फैलाते हैं Because it तो हमने can disturb सबको the instructions public दिए order. हैं। किस ये किस्म की- अफवाहें किस फैलाते किस्म हैं का तो हमने institutionalized तरीका सबको किया। ये कुछ इस इंस्ट्रक्शंस तरीके दी की नई चीजें किस हैं किस्म जो इस की बार के किस चुनाव किस्म में का सबको देखने की इंस्टीट्यूशनलाइज मिलेंगी। तरीका मैंने किया। मसील पावर के बारे ये में कुछ भी इस बताया, तरीके की मनी नई पावर के चीजें बारे हैं में जो भी इस बताया, बार के चुनाव में misinformation सबको के बारे देखने की मिलेंगी। तो ये जो मैंने मसील process पावर है के बारे में election भी का जो बताया, आज से मनी शुरू हो पावर रहा के है बारे में counting भी के बताया, बीच मिस इन्फॉर्मेशन के बारे जिसमें में। शोर तो ये जो शराबा प्रोसेस है गंदगी इलेक्शन की का जो आज से संभावना शुरू बनी हो रहा है रहती काउंटिंग के बीच वो तक, हमारा प्रयास जिसमें है कि शोर कम से कम शराबा उसके प्रति गंदगी हम की बहुत ज्यादा संभावना सजग बनी हैं। रहती थी। इसमें क्या वो करेंगे? हमारा प्रयास है कि कम से कम हो, उसके Under प्रति हम बहुत section ज्यादा सजग 69 हैं। and 79 इसमें of क्या the करेंगे? IT Act Under authorized section 69 and 79(3) of the IT Act, authority of each state Authorized- is empowered authority of each state take down is of the empowered social to media posts. ask for In almost all take states, down of the authorized social media posts. officials have In been almost appointed all or are states, being appointed. In each authorized district, we have done thorough officials trainings have been as to appointed how or to are deal being with these appointed. kind of a In menace. each district, So this is on the we have done preventive thorough side. trainings But there is as to also how to deal a with this kind of a promotional menace. side. So this is All on the our preventive entire side. machinery But there is also will now a promotional side. react to All whatever is our coming entire by machinery facts. will We now try and join the react instead to of whatever being is in the coming background. by If somebody is facts. trying to We will do try a and fake join kind of the a issue narrative, instead of being in the which is background. If disturbing the somebody level is trying playing field, to which is do disturbing a the fake public kind of a order, which is not narrative, based on the facts, which is and disturbing which the has level crossed the playing, line of the criticism. अपना बंद कर लेंगे तो चलेगा। Going to be live very soon means ये मिथ फैलाया जा रहा है, ये उसकी रियलिटी है। हम अपनी तरफ से आगे बढ़ के आपको एजुकेट करेंगे कि ये उसकी रियलिटी है। और सोशल मीडिया के बारे में आप सबसे भी एक अपील है कि थोड़ा देख लें, मतलब जो आया उसको आगे नहीं करना चाहिए। इसमें एक बहुत बड़ा झूठ का बाजार भी है। मैं बताऊं जो यहाँ पर चल रही है इसके बारे में सोच रहा था तो मैंने कुछ चंद लाइनें लिखी थी जो आपको बताना चाहता हूँ। झूठ के बाजार में रौनक तो बहुत है, गोया बुलबुले जैसी तुरंत ही फट जाती है। पकड़ भी लोगे तो क्या हासिल होगा सिवाय धोखे के। तो उसको थोड़ा
रोक के देखें, समझ लें आगे बढ़ाने लायक है कि नहीं है, ना बढ़ाएं। नाउ फ्रेंड्स, द लास्ट प्रॉब्लम, चुनाव के दौरान हमारे सामने एक और बहुत बड़ी समस्या है, और वो समस्या है चुनावी प्रक्रिया का, पॉलिटिकल डिस्कोर्स का घटता हुआ स्तर, चलो इसको हम आज करते हैं। जिसमें एज वी कॉल इट, इट्स ए प्लम्पटिंग लेवल ऑफ द पॉलिटिकल डिस्कोर्स। अगर हमने सब पॉलिटिकल पार्टीज को बहुत स्ट्रांग एडवाइजरी इशू की हैं, आप पूछेंगे कि एडवाइजरी तो दी, उसके बाद एक्शन क्या होगा, उसका भी जवाब मैं आपको दूंगा। एडवाइजरी इशू की हैं, जो भी पिछले 11-12 इलेक्शंस में, एक्चुअली जो पिछले 5 साल में जितने भी एमसीसी के वायलेशंस होते रहे, उसको हमने इकट्ठा करके एक फाइन पॉलिटिकल डिस्कोर्स का घटता हुआ स्तर, जिसमें वो मन चलाना कुछ दो। उसको हमने इकट्ठा करके नोटिस में हमारी गाइडलाइंस ले आई है, ये जिम्मेदारी हमने पॉलिटिकल पार्टी। सो नाउ व्हाट इज हैपनिंग, वी हैव पुट देम ऑन नोटिस and we will presume knowledge of the guidelines. These are the two fundamental changes which we have made silently. People were asking, you issued so many notices last time, did nothing, left it at that. That was a moral censor. Now we will go beyond. We will go beyond, and here we have said we will also look at the past. We'll also look at the history. We might look at a calibrated approach dealing with the MCC violations, which may be, जो एमसीसी वायलेशंस किस प्रकार की हो सकती हैं? आई मीन स्टेटमेंट्स which inspire, which should inspire rather than divide. इशू बेस्ड कैंपेन हो, हेट स्पीचेस, रिलीजियस स्पीचेस, प्राइवेट लाइफ का क्रिटिसिज्म is what is absolutely avoidable. People should be refraining from giving unverified and misleading advertisements or masquerading as an advertisement as a news. इसमें हमने एडिटर्स को भी एडवाइजरी इशू की है। वो एक न्यूज़पेपर में बड़ा बड़ा ऊपर में छप जाता है कि इसकी लहर और उसकी लहर। अगर ऐसा है तो साफ साफ लिखें कि ये एडवर्टाइजमेंट है, लेट इट नॉट पास थ्रू advertisement. We have issued these advisories. Now the time is, during this election, to go beyond advisories, take concrete action, for which in the advisories there are relevant sections of the acts which are also inbuilt. So notice is there, knowledge is there, sections are there. So please, our request is कि campaigning के दौरान please don't try to cross the red line. ये वैसे भी इसलिए जरूरी है दैट इन दिस डिजिटल वर्ल्ड जो भी एक बार मुंह से निकलता है उसका रिकॉर्ड तो 100 साल तक के लिए पैदा हो गया, वो बार बार चलता रहता है. सो प्लीज अवॉइड क्रिएटिंग डिजिटल मेमोरी ऑफ बैड वर्ड्स विच आर कमिंग फ्रॉम योर माउथ. प्लीज बी सिविलाइज्ड ड्यूरिंग द इलेक्शन. दिस इज व्हाट इज आवर एडवाइस. और एक बार जब लड़ाई झगड़ा होता है ना तो प्रेम का धागा टूट जाता है, और जब प्रेम का धागा टूट गया तो बड़ी मुश्किल होती है. रहीम ने कहा था, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चिटकाए, टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ पड़ जाए. तो क्यों ऐसी गांठ बांधनी है? थोड़ा प्यार मोहब्बत से कैंपेनिंग करें, शोर शराबा कम हो. फ्रेंड्स, पॉलिटिकल पार्टीज को और भी बहुत सारी स्ट्रीमलाइन करने के लिए उनकी एक्टिविटीज़ को हमने कदम उठाए हैं. ये मैं पिक्चर आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि हर फील्ड के अंदर में वी आर रेडी दैट हाउ वी वुड कंट्रोल दिस. क्या किया है? अराउंड 537 रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज हैव बीन टेकन आउट ऑफ द पॉलिटिकल स्पेस. वो क्या करती थी? किसी के नाम में कैंडिडेट खड़ा कर दिया, गाड़ियों की परमिशन ले ली, दूसरा कोई यूज कर रहा है, किस्म किस्म की भांति एंटाइटलमेंट ले लिया, भांति भांति का वो देवर क्लटरिंग द पॉलिटिकल स्पेस, क्राउडिंग आउट द जेन्युइन पर्सन्स. सो दैट इज व्हाट इट हैज बीन डन. सारी फाइनेंशियल जितने भी अकाउंट्स हैं पॉलिटिकल पार्टीज के और जितनी भी कंट्रीब्यूशन रिपोर्ट्स हैं वो सब डिजिटाइज्ड फॉर्म में हमारे पास आएंगी, ऐसा हमने उनको कहा. डायरेक्शंस दे दिए, इट हैज स्टार्टेड कमिंग. तो जो भी पॉलिटिकल फाइनेंस की चर्चा देश में चल रही है
उसके साथ साथ ये भी कार्य पीछे से बैकग्राउंड में चल रहा है, बिकॉज कमीशन ऑलवेज बिलीव्स इन द ट्रांसपेरेंसी इन द पॉलिटिकल फाइनेंसिंग. Plummeting level, I have already said. We have also asked the political parties to be very, very respectful to the persons with disabilities in their discourse, not to use the abusive words, also to not use children at all during the campaigning. बच्चे नहीं है इसलिए कि उन्हें कैंपेनिंग में लाया जाए. We'll be very strict if anybody does that. We are also giving advisories to political parties that have internal organizational structures within your party, within the parameters and in a right form. Friends, we are appointing 2,100 observers. जितनी चीजें मैंने आपको बताई, ये सब चीज को फील्ड ऑफिसर्स तो करेंगे ही करेंगे. हम 2100 ऑब्जर्वर्स को अपॉइंट कर रहे हैं और इस बार उनको हमने क्या खास सख्त हिदायत दी है. और जो भी डीओज लेवल प्लेइंग फील्ड प्रोवाइड कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, वो स्पेसिफिकली इसको देखेंगे. इंड्यूसमेंट एंड कोअर्शन, इंटिमिडेशन फ्री इलेक्शन हो, इस पर स्पेसिफिकली नजर रखेंगे, हमें रिपोर्ट करेंगे. फोर्स जितनी भी जा रही है किसी भी राज्य में, उसका डिप्लॉयमेंट रैंडमाइज्ड हो. ऐसा नहीं कि उस फोर्स को कहीं बैठा दिया, काम नहीं कर रही, या कहीं दूसरी जगह भेज दिया जहां जरूरत नहीं है. दे विल बी randomizing the force. Entire election machinery will be randomized in the presence of the observers. Now, having done all this, what are the, जैसे मैंने पहली स्लाइड में बताया था, तो what are we expecting, हमारे elections कैसे होंगे. So let me show you this. What is our effort? What is our endeavor? As a last slide, let me tell you. There are reduced repolls, that is what we are endeavoring. Zero violence, that's what we are endeavoring. No inducements, इस पे कार्य हो. फेक न्यूज कर्व की जाए. कैंपेनिंग क्लटर और बदमिजाजी कम हो और लोगों का पार्टिसिपेशन बढ़े. जो 67% पार्टिसिपेशन था वो बढ़ के अधिक से अधिक पहुंचे. With this, I would like to, in the end, appeal to the voters that elections belong to you. बहुत मेहनत की है हमने 2 साल में, आगे भी करेंगे, लेकिन दामोदर अब आपके हाथ में है. वी आर हैंडिंग ओवर द बैटन टू यू. प्लीज कम एंड वोट. पॉलिटिकल अपने जितने भी हमारे चुनाव कराने कर्मी जाएंगे, उनसे मैं फिर से एक बार अपील करना चाहता हूं, आज सुन रहे होंगे कहीं ना कहीं, कि लेवल प्लेइंग फील्ड प्रोवाइड करना उनका परम धर्म है. इसमें से कतई भी कोताही ना बरतें. उनको बताया गया है, इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं, अगर बरतेंगे तो विल बी रूथलेस इन डीलिंग, बिकॉज मेजॉरिटी ऐसा नहीं करती. अगर 1-2 करेगा तो उसकी वजह से हम अपने इलेक्शंस को बदनाम नहीं होने देंगे. विल बी रूथलेस. एंड लास्टली, माय अपील टू द पॉलिटिकल पार्टीज अगेन. वी आर वेरी कमिटेड फॉर एथिकल पॉलिटिकल डिस्कोर्स. I would like parties to again appeal that please maintain decorum in campaigning and refrain from abuses and personal attacks. राजनीतिक दलों को बहुत पर्सनल अटैक से बचना चाहिए. फिर मुझे बदर साहब का एक शेर याद आता है, दुश्मनी जमकर करो लेकिन ये गुंजाइश रहे. दुश्मनी जम के करो लेकिन ये गुंजाइश रहे, जब कभी हम दोस्त हो जाएं तो शर्मिंदा ना हो. और वैसे भी आजकल जल्दी जल्दी दोस्त बनना और जल्दी जल्दी दुश्मन बनने की प्रक्रिया थोड़ी ज्यादा चल रही है. तो पार्टीज कम से कम ऐसा ना गंदा बोलें कि वो एक दूसरे के दुश्मन बन जाएं और फिर कुछ ना हो सके. विद दिस I would once again thank all the press media who have come here. Very sincerely, this is what I have seen in now 3.5 years. You are our natural allies. You are eyes and ears. हमारा कोई क्रिटिसिज्म होता है आप करते हैं, हम अपनी बात कहते हैं आप करते हैं. आप ही के थ्रू हम वोटर्स पे पहुंच सकते हैं. प्लीज वोटर्स तक हमारी बात पहुंचाइए, उनको बाहर निकलवाइए. ये सारी स्लाइड्स, सारा प्रेजेंटेशन आपको अभी तुरंत इसी माध्यम से हमारी वेबसाइट पे मिल जाएगा. डाउनलोड, यूज इट इन योर स्टोरीज.
कुछ और चाहिए तो हमें बताइए, हम देंगे। नाउ आई कम टू द शेड्यूल which you were waiting, and I hope I didn't delay it. I have not bored you by what I said. So now we'll be announcing schedule in 3 phases. First, for the by-elections. There are 26 assembly constituencies in the country जहां बाई-पोल होना अभी है ड्यू। बिहार, गुजरात, हरियाणा, झारखंड, महाराष्ट्र, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, तमिलनाडु, इन सब राज्यों में बाई इलेक्शंस होना ड्यू है। आज तक की जितनी भी वैकेंसी थी बाई इलेक्शंस की 26 की 26 हम पूरी कर रहे हैं, ताकि हमारे खाते में कोई भी वैकेंसी ना रहे। और ये उसी फेज में होंगी जिस फेज में पार्लियामेंट्री इलेक्शन उस पर्टिकुलर इलाके में हो रहा है। वो कब हो रहा है वो मैं आपको जब फेज आएंगी तो उसमें दिखा दूंगा। बट ऑल दी 26 assembly constituencies will go to the by-poll so that during this election itself we can complete this entire process. अगर आपने नोट कर लिया हो तो now I come to the assembly elections. साथियों, 4 राज्यों में असेंबली इलेक्शंस जैसे मैंने बताया था जून में खत्म हो रहे हैं। सिक्किम जो 2 जून को विद 32 असेंबली सीट्स, उड़ीसा जून 24 जून with 147 assembly constituencies, Arunachal Pradesh on 2nd of June with 60 assembly constituencies, Andhra Pradesh on 11th June 24 with 175 assembly constituencies. These are the simultaneous elections to the parliament. They will be held simultaneously. They will also be held in the same phase where the parliament elections will be held. So now, when I tell you the parliamentary elections, then I will tell you. But in case of Andhra Pradesh, the date of issue of Gazette notification would be 18th of April 2024, और डेट ऑफ पोल वुड बी 13th May 2024। तो आंध्रा के केस में नोटिफिकेशन 18 अप्रैल 24 को होगा और डेट ऑफ पोल 13th May 24 को होगी। इसके बाद अरुणाचल प्रदेश में डेट ऑफ गजट नोटिफिकेशन 20 मार्च को होगा और डेट ऑफ पोल 29 अप्रैल को होगी। 20 मार्च को गजट नोटिफिकेशन, 29 अप्रैल को डेट ऑफ पोल, सॉरी 19 अप्रैल को, 20 मार्च 19 अप्रैल। इस प्रकार सिक्किम में भी 20 मार्च और 19 अप्रैल, 20 मार्च को नोटिफिकेशन, 19 अप्रैल को डेट ऑफ पोल। उड़ीसा में फर्स्ट नोटिफिकेशन, दिस विल बी कंडक्टेड in phases, and first phase would be on 18th April and date of poll would be 13th May. 5th phase में होगा second phase of the assembly of Odisha 26th April and 20th May. Then 6th phase and 7th phase also Odisha would have the assembly elections. 6th phase being on 29th April and 25th May elections. ये सब आपके साथ में हम अभी शेयर कर रहे हैं ताकि आपको लिखने में, रिपोर्ट करने में इसको आसानी हो। कमिंग टू दी जनरल इलेक्शंस टू दी लोकसभा, जो विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक त्योहार है, सबसे बड़ा लोकतांत्रिक त्योहार, बिगेस्ट। 543 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज ऑफ विच 84 are reserved for SCs and 47 are reserved for STs. तो इस 543 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज के महात्योहार में शेड्यूल बताने से पहले सभी वोटर्स का फिर से हाथ जोड़ के आग्रह, अनुरोध, गुजारिश दैट प्लीज ज्वाइन फॉर द वोटिंग, कम ऑन द डे ऑफ वोटिंग। छुट्टी मनाने ना जाएं, जरूर आ जाएं। शेड्यूल ऑफ द लोकसभा पोल, Phase 1,
we'll do it in 7 phases, as was done last time. 7 phases. Phase 1 will start from 20th March notification, 5 days from now. And last date of withdrawal would be 30th March and date of poll would be 19th of April. इसमें फेज 1 का शेड्यूल एक दिन से हमें 2 बार करना पड़ रहा है, फिर बिहार के लिए वहाँ एक फेस्टिवल है, तो नोटिफिकेशन की डेट सेम है, लेकिन बस लास्ट डेट ऑफ विड्रॉल हमें 30 मार्च की जगह 2 अप्रैल सिर्फ बिहार के फर्स्ट फेज के लिए करनी पड़ रही है, क्योंकि वहाँ त्यौहार हैं। और 19 अप्रैल को यहाँ वोटिंग होगी और पूरी कंट्री में 4 जून को काउंटिंग होगी। सो फेज 1 दिस विल लुक लाइक दिस। ये मैप भी हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। अभी ये जो येलो पोर्शन है ये ऐसा दिखाई देगा। तो इसमें जो फेज 1 का जो मैप है इसमें नॉर्थ ईस्ट नीचे तमिलनाडु, राजस्थान, सेंटर में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड, और ऊपर में जम्मू कश्मीर की 1 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी। ये येलो फर्स्ट फेज का आपके सामने में मैप है। सेकंड फेज और फर्स्ट फेज में 21 स्टेट्स जाएंगी पोल में। सेकंड फेज notification will start on 28th of March and date of poll will be 26th of April. Similarly here in case of J&K, because of the some holiday, the date of 1 day would be different, date of security of nomination would be different, but date of gazette notification और date of poll would be common. Phase 1 में 21 राज्य पोलिंग में जाएंगे और फेज 2 में उसमें से और राज्य जुड़ जाएंगे। सो दिस इज द मैप विच वुड बी फेज 2, जिसमें हम नॉर्थ ईस्ट में काफ़ी जगह चुनाव को कंप्लीट करते हुए, तमिलनाडु में कंप्लीट करते हुए सेकेंड फेज में राजस्थान को भी कंप्लीट करेंगे। फेज 3 वुड बी फ्रॉम 12th of April and date of poll will be 7th of May. इसमें भी टोटल 12 स्टेट्स उस समय में जा रही होंगी और इस फेज में 3 नए राज्य में चुनाव शुरू होगा। इसका मैप कुछ इस तरह से दिखाई देगा। राजस्थान हम कवर कर चुके होंगे, तमिलनाडु कवर कर चुके होंगे, केरला कवर कर चुके होंगे, गुजरात इसमें कवर कर लेंगे, नॉर्थ ईस्ट पूरा कवर कर चुके होंगे और हम नए राज्यों को मिला के 3 इसमें नए राज्य भी जुड़ेंगे। फोर्थ फेज में 18 अप्रैल को गजट नोटिफिकेशन होगा और डेट ऑफ पोलिंग वुड बी 13th of May. Date of counting in the entire country would be 4th of June for all by-elections, for the assembly elections, for the parliamentary elections. इसका मैप कुछ इस तरह का दिखाई देगा। इस समय तक हम इसमें तेलंगाना, आंध्रा, उड़ीसा would start, and by that time, other than that, entire South India would be complete, entire Western India would be complete, North East would be complete. और फिफ्थ फेज 26 अप्रैल से शुरू होगी और 20 मई तक चलेगी। 20 मई तक डेट ऑफ पोल होगी, बीच में नॉमिनेशन, स्क्रूटनी और विड्रॉल की डेट्स रहेंगी। काउंटिंग ऑफ कोर्स इज 4th of June. It will look like this, which is in front of you, and phase 5 में 49 constituencies will be going to the poll. Phase 6 में 57 constituencies will go to the poll, starting from the gazette notification on 29th of April and finishing on 25th of May 2024. इसका मैप कुछ इस तरह का दिखाई देगा कि मोस्टली यूपी, बिहार, बंगाल, उड़ीसा और साथ में कुछ नॉर्थ का पोर्शन चालू रहेगा। लास्ट फेज, 7th phase, notification will be on 7th of May and polling on 1st of June.
The last polling would be on 1st of June and counting on 4th. And इस फेज में पूरा पंजाब, हरियाणा भी शामिल रहेगा, बंगाल, बिहार, उड़ीसा. This is how the map will look. Yellow denotes the first phase, and accordingly the legends are given. We will share this map also with you, ताकि आप इसे अपने साथ रख सकें, इसके हिसाब से देख सकें. ये भी कोशिश की है हमने, और अगर पूरी फेज वाइज हम पिक्चर दें, ये भी एक अच्छी स्नैपशॉट है, जिसमें फेज 1 में 102 कॉन्स्टिट्यूएंसीज, फेज 2 में 89, फेज 3 में 94, फेज 4 में 96, 49, 57, 57. So we'll start with the 102, the largest, slowly come down and finish northeast, move up from the south and finish the western area. तो इसमें वेदर और हर चीज़ का ध्यान रखते हुए काफ़ी सोचने के बाद ये शेड्यूल बनाया गया है. विद दिस जो सिंगल पोल डेट है वो 22 स्टेट में होगी. 2 राज्य 4 बार में जाएंगे, कर्नाटका, राजस्थान, त्रिपुरा, मणिपुर. 3 फेज में 2 जाएंगे, छत्तीसगढ़ एंड असम. 4 फेज में 3 जाएंगे, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, झारखंड. 5 फेज में 2 जाएंगे, महाराष्ट्र एंड जम्मू कश्मीर. जम्मू कश्मीर की हर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए 1 फेज होगी. और 7 फेज में 3 जाएंगे, उत्तर प्रदेश, बिहार एंड वेस्ट बंगाल. विद दिस फ्रेंड्स, I end my address and thank you very much. Thank you, sir, for those detailed remarks. Please hold on. So, you raise your hands, हाथ खड़ा कर दीजिए. Micers आपके पास आएंगे. So we will start with you in the first row. Where are the micers? आप आइए, इनको दे दीजिए. जो Yeah, CC sir will take 4-5 questions at one time. So after that, we'll take the next person. Yeah. सर, मैं मोहित दुबे हूँ न्यूज़ नेशन से. सर, मेरा सवाल ये है कि आपने 7 चरणों में मतदान ही करवाया है. बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र हिंदुस्तान है. अपोजिशन पार्टियां जो है ये आरोप लगा रही हैं कि 7 चरणों में क्या ज़रूरत है, और इसकी वजह से सत्ताधारी दल को फायदा होता है. और छोटा सा सवाल सर एक और है कि ईवीएम को लेके लगातार अपोजिशन धरना दे रहा है, सवाल उठा रहा है. आप हमेशा ये कहते रहे कि निष्पक्षता के साथ आप मतदान करवाते रहते हैं ईवीएम के माध्यम से, तो उनके सवाल के बारे में आप क्या जवाब देंगे? आप ये जो लाइट जैकेट पहने हैं सेंटर में, इनको दे दीजिए. जो हाँ, ये जस्ट होल्ड ऑन. सर, मेरा नाम रविंद्र सिंह शोरान है. आई वुड लाइक टू आस्क कि जो आपने बताया कि 3500 करोड़ रुपए को सीज किया, उसके बाद कार्रवाई कितने लोग जेल गए, कौन कौन सी पॉलिटिकल पार्टीज इन्वॉल्व थी, और जो लीकर सीज किया गया उसमें कितने केसेस रजिस्टर हुए, उसकी डिटेल्स इलेक्शन कमीशन हमारे साथ कभी शेयर करता नहीं है आफ्टर द इलेक्शन हैपन्स. दिस लेडी इन द फ्रंट, या इधर मिडिल में जो है, इनको माइकर्स, हाँ इनको दे दीजिए. या इनको दे दीजिए. हाँ, please switch on your mic. Great. Samir Hussain from BBC News. This is an incredible feat to try and get every person who's eligible to vote. I'm wondering how much money is being spent, and in addition, what is the biggest concern in terms of these elections? Okay. The lady in the 4th row over there with that black dress, उनको दे दीजिए. Micers. मिडिल में, हाँ उनको जो बीच में है वो लेडी जो है, हाँ गिव इट टू हर. यस, स्विच ऑन योर माइक. Hi, I'm Ashlyn. You said in your speech that... Can you just introduce yourself? I'm Ashlyn Matthew. From? National Herald. Thank you. You had said in your
there should be no hate speech. There will be a calibrated approach to code violations. But there have been several complaints against the Prime Minister and Amit Shah, but none of the ECA has not taken action against them. But you have taken action against the opposition leaders. So even if you take a calibrated approach, so won't it be the opposition leaders who get picked up more, who will get notice from you more than the ruling party leaders? Yeah, the gentleman in the second row here. Yeah, please. Yeah, mic is live. Hello, hello. Sir, Venkatraman from Dinamala, from Tamil Nadu. Sir, every election you are getting new experience regarding the control of money power. How are you going to control the money power? For example, last election 2019, at Vellore constituency, the candidate Kadira Anand, from his place, crores and crores of rupees money has been recovered from him. But what kind of action has been taken against him? And he's going to be the future candidate from the same constituency. Let me first take the answers of these questions of the first round. First question ये था कि 7 फेज में इलेक्शन क्यों? और अपोजिशन पार्टीज का ये आरोप है कि 7 फेज में होने से लेवल प्लेइंग फील्ड डिस्टर्ब होती है, किसी को फायदा होता है। एक बार कभी पूरी कंट्री का भौगोलिक और ज्योग्राफिक इतिहास और ज्योग्राफिक स्थिति को नजर डाल के देखिए। नदी, नाले, बर्फ, पहाड़, जंगल, गर्मी, सिक्योरिटी फोर्सेस का मूवमेंट कभी सोच के देखिए। They will be moving like within 3 to 4 days between the gap in the phases. They will move. They will walk length and breadth of the country. उनके ऊपर प्रेशर कभी देखिए कितना होता होगा। कभी इलेक्शन मशीनरी की पूरी प्रोसेस, कभी एग्जाम्स, कभी फेस्टिवल्स, होली, रमजान, रामनवमी, पता नहीं क्या क्या फेस्टिवल्स बीच में है। जब कैलेंडर पे हम लेके बैठते हैं तो एक डेट फिक्स करते हैं, दूसरे में चली जाती है, दूसरे फिक्स करते हैं, कहीं प्रॉब्लम आ जाती है। हम किसी को फेवर करने के लिए, किसी को नुकसान करने के लिए कोई भी एक्शन नहीं लेते, कोई भी एक्शन नहीं लेते। किसी को ऐसा भ्रम है तो वो गलत है। हम फैक्ट्स पे बात कर सकते हैं। जहां की जो मैंने कहा था, हर राज्य अपने आप में अलग अलग है। किसी राज्य में 1 में भी है, किसी राज्य में 7 में भी है। जिन राज्यों में 7 में है वहां का विस्तार बहुत बड़ा है, नंबर ऑफ पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज बड़ी हैं, कंटेस्टेशंस ज्यादा हैं, इसलिए वो 7 में है। माय फ्रेंड फ्रॉम द तमिलनाडु हैज आस्क्ड, वहां 1 में है, लेकिन वहां दूसरा चैलेंज है जिसके लिए व्हाट ही हैज टॉक्ड अबाउट, देयर इज अ चैलेंज ऑफ मनी पावर इन दैट पर्टिकुलर स्टेट, एंड एज आई मेंशन्ड, वी आर एक्सट्रीमली केयरफुल ऑफ व्हाट ही हैज आस्क्ड। If you learn it from the assembly elections which happened in another southern state recently, we have been able to cure that menace of money power to a very large extent, and we would control this. Please don't be worried. Similarly, I'll on the expenditure side take this question from BBC that how much we spend. Each candidate is allowed to spend in the parliamentary constituencies up to 80 lakhs, up to limit, and in the assembly up to 90, up to 90 lakhs, and in the assembly up to 38. So if you combine amongst the candidate, that's the upper limit, which is the expenditure. You have asked about, somebody asked about EVMs. EVMs के बारे में मैं बहुत बार बता चुका हूं, लेकिन ठीक है, आपने फिर क्वेश्चन पूछा है तो, और देश में एक ऐसा अभियान भी चल रहा है जिसको बताना भी जरूरी है, इसलिए मैं थोड़ा विस्तार में बता ही देता हूं। वैसे बहुत बार बता चुका हूं, 40 बार लगभग इस देश की संवैधानिक कोर्ट्स, हाई कोर्ट्स एंड सुप्रीम कोर्ट्स ईवीएम के ऊपर में जितनी चुनौतियां हुई हैं उनको देख चुकी हैं। चुनौतियां किस प्रकार की हुई? ये हैक हो सकती है, चोरी हो जाती है, 19 लाख मिसिंग हैं, इसमें दिखाई नहीं देता है, ये कंप्यूटर से खराब हो जाती है, रिजल्ट्स बदल सकता है, मैनिपुलेट हो सकता है। हर बार संवैधानिक कोर्ट्स ने इसको रिजेक्ट किया है। क्या कहा है? कभी कहा कि इसमें वायरस लग ही नहीं सकता,
नो क्वेश्चन ऑफ इंट्रोड्यूसिंग वायरस, कभी कहा इनवैलिड वोट्स नहीं हो सकते, कभी कहा रिगिंग इज नॉट पॉसिबल, कभी कहा कि व्हेन देयर इज सेक्शन 61A इन द आरपी एक्ट व्हिच एम्पावर्स द यूज ऑफ द ईवीएम्स, जब तक वो खत्म ना हो तब तक ये प्रश्न उठाना गलत है। कभी कहा कि ईवीएम्स आर फूल प्रूफ डिवाइसेस फॉर काउंटिंग एंड एलिगेशंस ऑफ टेम्परिंग आर बेसलेस। कभी कहा कि आप एक के बदले 5 वीवीपैट गिनिए, वो हमने शुरू कर दिया। अब तो ये आ गया है नतीजा कि कोर्ट्स ने जुर्माना लगाना शुरू कर दिया। दिल्ली हाई कोर्ट ने मिस्चीवियस कहते हुए 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया, फिर माननीय उच्चतम न्यायालय ने 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया। अभी फिर रिसेंटली माननीय उच्चतम न्यायालय ने एक पिटीशन खत्म की है। कितनी बार सुनेंगे, क्यों बार बार वही बिलाप करना है? कोई चीज है तो हमसे पूछिए। हैक नहीं हो सकती, किसी सूरत में नहीं हो सकती, एंड जो परिणाम आते हैं वही प्रमाण है, बार बार परिणाम आते हैं। कोई भी ईवीएम लेके बैठ जाता है सोशल मीडिया पे, वो डिब्बा लेके एक बैठ जाता है, और आजकल एक नया ट्रेंड शुरू हुआ है, वो थोड़ा सा एक्सपर्ट भी बन जाता है। आजकल 1-2 एक्सपर्ट भी चल रहे हैं सोशल मीडिया पे, वो कहाँ की डिग्री है, कहाँ के एक्सपर्ट हैं, थोड़ा देखना भी चाहिए। वो बताते हैं कि ये डिब्बा है, वो टूल बॉक्स जैसा डिब्बा होता है, उसके अंदर में क्या है पता नहीं है, उसमें से एक गत्ते के डिब्बे में से एक स्लिप भी निकलती है। वो धरना भी हो जाता है कि स्लिप बदल गई, मैंने यहाँ बटन दबाया था और यहाँ ही गलत निकल गई। भाई आपने क्या दबाया था, किसी को बताया था क्या? क्या निकला, किसी को बताया था क्या? अरे संविधान कोर्ट्स कह रही हैं। अच्छा, जितनी बार हमसे आप पूछेंगे उतनी बार हम उसका एक क्वेश्चन लेके आपको FAQs में डाल देंगे। 100+ क्वेश्चन है। और भाई political parties have come into existence because of the EVMs. There are many smaller political parties which in the age of the ballot papers might have not come into the existence. It was the fairness and the political parties know in the heart of their hearts. सब EVMs का 3-3 बार मॉक पोल होता है, कैंडिडेट्स के सामने में होता है। फिर भी अगर कुछ आप किताब लाए हैं, किसी के पास है क्या? एक हमने किताब भी बनाई है, एक जितने लीगल केसेस 40 केस, देखिए दीज आर 40 केसेस ऑन ईवीएम। इसमें FAQ भी है, आप सब लीजिए इस किताब को हमसे। इसमें FAQ भी है और इसमें फ्लो चार्ट्स भी हैं। देखिए हमारी वेबसाइट पे है ये, थोड़ा पढ़ने का तो कष्ट करिए, खासतौर से जो एक्सपर्ट महोदय हैं। वो बहुत सारे एक्सपर्ट्स हैं यहाँ, मतलब कंट्री में कोई भी बन जाता है, किसी पे कोई रोक नहीं है। हमने इसमें चार्ट भी लगाया है कि कितनी बार सत्ता में रहने वाली पार्टियां ईवीएम ने बदल दी। तो मुझे भी ईवीएम पे फिर मैं रात सोच रहा था ये प्रश्न तो आएगा जरूर, तो फिर रात को मैंने कुछ लिखा अपने हाथ से, वो फिर आपको सुनाता हूं। अधूरी हसरतों का इल्जाम, अधूरी हसरतों का इल्जाम हर बार हम पर लगाना ठीक नहीं। ये ईवीएम कह रही है, मैं नहीं कह रहा हूं। अधूरी हसरतों का इल्जाम हर बार हम पे लगाना ठीक नहीं, वफा खुद से नहीं होती, खता ईवीएम की कहते हो। और बाद में गोया जब परिणाम आता है तो उस पर कायम भी नहीं रहते, आप ही के पक्ष में रिजल्ट आ जाता है। ये क्या बात है भाई? कितने दिन? ईवीएम्स आर 100% सेफ, 100% श्योर। वी नो नाउ in last 2 years again we have done large number of improvements. एक ईवीएम की नंबर जो भी किस बूथ पे जाएगी वो कैंडिडेट को दिया जाएगा, इसलिए इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाउ जो एमसीसी के बारे में प्रश्न पूछा, जिसमें आप ये पूछना चाह रहे हैं कि हम बायस्ड होके किसी के खिलाफ एक्शन लेते हैं, किसी के खिलाफ नहीं लेते, यही आप प्रश्न बेसिकली पूछना चाह रही हैं। पूछना नहीं चाह रही हैं, आरोप लगा रहे हैं, जिसका मुझे जवाब आपको देना चाहिए। करेक्ट, वेरी राइट, यू हैव ए क्वेश्चन राइट टू आस्क। आप पिछले 8, 10, 11 इलेक्शंस की सारे आरोप जितने हमारे पास आए हैं वो सबको एक बार पढ़िए। सबको पढ़ने के बाद सबके नोटिसेस देखिए जो हमने दिए हैं।
उसमें जहां जहां कोई भी वायलेशन एस्टेब्लिश होता हो, उस नोटिस के बाद, जवाब आने के बाद भी हमने ऐसा नहीं है सब में कार्रवाई की है. We are very, as I said, they are kind of a moral censor which we have in the beginning issued. और जिस किसी के भी खिलाफ में अगर कहीं भी कोई केस बनेगा, howsoever high star campaigner he or she may be, we will not sit back, we will take action. Next. Sir, we'll take some questions from that side. Yeah, the middle row. There is a gentleman holding both his hands up. उनको दे दीजिए. बोलिए थोड़ा जल्दी दें. Yes, sir. माइक के लोग थोड़ा जल्दी दें. थोड़ा माइक जरा जल्दी दीजिए. वो सेंट्रल रो में है वो. हाथ जी. उठा रहे हैं वो. जी मैं आशीष हूँ अमर उजाला डिजिटल से. मेरा सवाल है सर, जो आपने अभी 4M की बात की थी, उसके लिए क्या कोई एडिशनल डिप्लॉयमेंट आपने किया है? अगर किया है तो वो क्या है सर? Just, yeah, give it to him there. Yeah, please. मैं राजस्थान पत्रिका से नवनीत मिश्रा हूँ. अभी इलेक्टोरल बॉन्ड पे जिस तरीके से घमासान मचा हुआ है और सुप्रीम कोर्ट ने भी उस सिस्टम को खत्म कर दिया है, और जो चुनावी चंदे की जो पारदर्शिता की बातें होती है, तो उसके लिए वो सिस्टम लाया गया था. तो आयोग का अगला कदम क्या होगा, क्योंकि इसके बाद से कैश की चुनौती है वो बढ़ेगी चुनाव में. Sir, Sunil Prabhu from NDTV. Just two, three points, because you just now made a comment that every EVM has a number, and your own commission had asked for a totalizer. That totalizer has not happened because, if you wanted in the essence of free and fair election, then you should not be identified. The others, you said disclose. In the interest of the general public, and now we can't get from Mr. Arun Goel because he hasn't only cited personal reasons. In the best interest of the commission, would you be able to disclose what exactly happened? Why did Mr. Arun Goel, who worked with you and sadly is not here today in this entire process, if you can come clean about what exactly happened, what were the differences that led to his sudden and abrupt exit? That's Ravi Tripathi, DD News. Go there. Yeah. सर मैं रवि त्रिपाठी हूँ जी न्यूज़ से. मेरा सवाल ये है कि एक तो सीट के नंबर जो सर आपने दिए हैं वो 543 के बजाय 544 हो रहे हैं काउंट करने पर. ऐसा क्यों है, ये एक तो जानकारी. और दूसरा कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का जो सवाल खड़ा किया हमारे किसी दोस्त ने कि बार बार विपक्ष ये सवाल खड़ा करता है, तो पिछली बार उन्होंने नाम दिया कि मोदी कोड ऑफ कंडक्ट, जिसमें मोदी के खिलाफ आप सॉफ्ट होते हैं और राहुल गांधी के खिलाफ आप ज़्यादा एक्शन लेते हैं. ऐसा क्यों होता है, ऐसा आरोप क्यों लगता है चुनाव आयोग? Gentleman next to you. Yeah. सर नीरज हूँ न्यूज़ 18 इंडिया से. सर पहले तो चुनाव आयोग को बहुत बहुत बधाई कि आप लोग पूरी कंप्लीट टीम हो गए दोनों चुनाव आयुक्तों को, और इस बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम लोग का वास्ता हो रहा है. हमारा सवाल ये है कि ये तो हमें अंदाजा था कि जम्मू और कश्मीर में विधानसभा के चुनाव नहीं होंगे इस बार, लेकिन ऐसा क्यों किया है? हालांकि आपके पास वक्त है, कोर्ट ने भी आपको वक्त दिया है. जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव न कराए जाने की क्या वजहें हैं? Yeah, the gentleman is yeah, do it. Yes. Very. Sir, my name is T.N. Ashok. I used to be former editor of PTI. I also write a lot of political articles from New York. So I just wanted to know, I was just following the Federal Election Commission of the US, which publishes on its website the amount of money raised by presidential candidates. Like say, it has just come out only yesterday. Biden has raised about $106 million. Trump has raised $88 million. Nikki Haley has raised about $48 million. And Vivek Ramaswamy has raised about $24 million. Is it possible for the Election Commission of India to publish such kind of details of not the candidates, but the parties? How much have they raised for the 2024 elections? Yeah, thank you. CSU will take questions. Now let me answer these questions first. Very critical, very important questions. What are in everybody's discussion during this time, and it is necessary that one clears the stand on that. So first of all, I must congratulate that you have calculated it's 544, not 543. I never guessed that anybody would so quickly calculate this. कि ये 543 सीट हैं तो 544 टोटल में कैसे आ गई? एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में 2 बार इलेक्शन होंगे, which is in Manipur.
तो वो 2 बार काउंट हो रहा है, इसलिए 544 है. So this is the first part of yours. Let me come to Mr. Prabhu. You asked the questions on totalizer. I entirely agree with you that booth wise रिजल्ट मालूम होने से किस बूथ पर किसने किसको कितना वोट दिया ये जानने से इट्स नॉट ए बेस्ट पॉसिबल सिचुएशन इन द कंट्री. We fully agree with this, and therefore we brought totalizer. The totalizer was an instrument कि जैसे एक राउंड में 14 टेबल पर काउंटिंग हो रही है, तो 14 मशीन्स को एक साथ जोड़ दीजिए और 14 का रिजल्ट एक साथ आएगा, तो कम से कम इतना पता नहीं लगेगा. लेकिन महाशय, यहां तो एक ही मशीन के रिजल्ट पे भरोसा नहीं हो रहा. मैं 14 जोड़ दूंगा तो लोग बोलेंगे पता नहीं क्या कर दिया. Let the political system mature itself. The need is to introduce totalizer. We are ready to introduce it. Technology is ready. But let one has to work in the entire landscape. Let that be matured further. We prepared the machine to take votes of the migrant workers remote voting. The prototype is ready. Machine can take 72 polling assemblies together. That's a step towards remote voting. We are also ready at some stage for remote voting through electronically, through blockchains and all. But let such things take time to assimilate, to adjust. एक समय होता है हर idea का. So perhaps the time for this idea has not come. It is a little premature. But yes, it can tackle that ill. About my friend you asked. Mr. Arun was a very, very distinguished member of our team, and I thoroughly enjoyed working with him all the time. But in every institution, somebody will have to be given the personal space, and I'm sure the personal space should not be touched, and one should not be insensitive to ask personal questions. If he had personal reasons, it's fine, you must respect it. In the commission, let me make it clear to everybody. As you said, disclose. We also have another principle: participate. Involve all political parties. So in the commission, we have a very sound tradition, not today, of large, and I must thank this to my predecessors, worthy predecessors. Whatever we are today, it is because of them. And that's one tradition in the commission, that dissent within commission is encouraged. Within 4 walls of ECM, the commission room, which we call, it's a round room. Because it's such a complicated exercise in the world, 3 minds are always better than 1. We discuss, we sleep over issues, we take time, we assimilate. And हमेशा एक उसमें कहावत है ना, फिर मुझे याद आ गया, वैसे ही, निंदक न्यारे राखिए. आसपास रखने चाहिए जो लोग आपको चैलेंज कर सकें. सो कमीशन में बहुत ट्रेडिशन है, वो हमेशा होता रहा है और होते रहना चाहिए. सो दैट्स द आंसर विच आई वांटेड टू गिव यू. जम्मू कश्मीर असेंबली इलेक्शंस क्यों नहीं हमने कराए, ये आपने एक प्रश्न पूछा. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नीरज जी आपका. हम बहुत कॉन्शियस हैं इस बात से, और बीच बीच में आरोप भी लगते रहते हैं. हम वहाँ गए थे, तब भी हमसे लोगों ने कहा कि हमें तो सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा आपसे क्या आपको कहलवाने के लिए कि इलेक्शन कराइए, और आप क्यों नहीं कर रहे हैं. तो पहली बात, आपने इतने समय से क्यों नहीं किया. तो पहली बात मैं सबके सामने ये इसको स्पष्ट करना चाहता हूँ कि जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट वाज पास्ड इन 2019. ये सबको विदित है कि 2019 में जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास हुआ. उसमें जम्मू कश्मीर की असेंबली में 107 सीटों का प्रावधान किया गया. उस 107 में से 24 सीटें रिजर्व थीं पाक ऑक्यूपाइड J&K की, बची 83. 83 में से 7 रिजर्व थी SC के लिए, और ST के लिए कोई रिजर्वेशन नहीं था.
राइट? 2022 में उसके बाद डिलिमिटेशन कमीशन आया और उसकी रिपोर्ट्स को एक्सेप्ट करके नोटिफाई किया गया। उसने इन सीटों की संख्या में परिवर्तन कर दिया। तो अनदर एक्ट चेंज दिस नंबर ऑफ सीट्स। क्या हो गया? 107 से बढ़ के 114 हो गई, 24 उसमें पाक ऑक्यूपाइड जेके की रही, 90 बची, तो 83 से बढ़ के 90 हो गई और 9 सीट एसटी के लिए रिजर्व कर दी गई। ये नया फीचर क्रिएट हो गया। और साथ ही साथ 2 सीट माइग्रेंट्स के लिए रिजर्व कर दी गई, जिसमें से 1 वुमेन की थी। और उसके बाद 1 सीट का नॉमिनेशन अलाउ किया गया, जो कि पीओके से डिस्प्लेस्ड लोग जो इंडिया में हैं उनके लिए वो रिजर्व की जाएगी। और ये सारे, जिसका मतलब Reorganization Act and Delimitation Act were not in sync, and therefore there was no occasion for the commission to conduct the election till that happens. When did that happen? That happened in December 2023 by amendment in the J&K Reorganization Act. तो हमारा मीटर कब से चालू हुआ है? दिसंबर 2023 से मीटर चालू हुआ है चुनाव कराने का। असेंबली और पार्लियामेंट में चुनाव कराने के लिए हम J&K के सभी पॉलिटिकल पार्टीज ने हमसे कहा, ऑल, कि आप हमारा चुनाव पार्लियामेंट के साथ करेंगे। वी रेस्पेक्ट दैट, और हम समझते हैं कि हमारी ड्यूटी है, हम उसे कराएं। सारी एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी ने टुगेदर एक स्वर में कहा कि सर हम एक साथ नहीं करा सकते। हमने पूछा क्यों? तो उनका आंसर था कि जब असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी के चुनाव साथ साथ में होंगे तो एक असेंबली में लगभग 10 से 12 कैंडिडेट खड़े होंगे। सो 90 इंटू 12 करीब 1000 कैंडिडेट हो गए। और J&K में सिक्योरिटी की वजह से हर कैंडिडेट को कम से कम 2 सेक्शन फोर्स प्रोवाइड करनी पड़ती है। 2 सेक्शन फोर्स का मतलब हो गया कि हमें करीब 1000 के बीच में 450-500 लोगों की कंपनीज की जरूरत और एक्स्ट्रा पड़ेगी। वो इतने बड़े देश में इस समय में सिक्योरिटी रीजंस में प्रोवाइड नहीं था, बट वी स्टैंड कमिटेड कि हम जैसे ही ये चुनाव खत्म होते हैं उसके तुरंत बाद, क्योंकि फोर्सेस की हमारे पास अवेलेबिलिटी हो जाएगी, हम चुनाव जल्दी से जल्दी वहां कराएंगे। लास्ट क्वेश्चन अगेन, इलेक्ट्रल बॉन्ड्स एंड चुनावी चंदा। और जो somebody asked from this side as to how the disclosures can be made through the political parties as to how much they collected. So as regards electoral bonds, Commission has always been in favor of transparency right from the stage when we submitted our stand in the Honorable Supreme Court. Again, in a democracy, there is no scope for hiding things. Democracy is all about making everybody know, aware, transparency, information. It must be shared. We are all for it. So this is the first part of the entire exercise. It must be known. The country has to now also ask and find solutions to an institutional mechanism where the donor's privacy is also considered, is a point in question. We have made it compulsory for all political parties to make the contributions they are receiving. The answer to this side as to the declarations are made on the donations. Every political party is required to, under the guidelines, to make declaration to us on the contributions they receive. Also in the annual accounts, how much they have collected, how much they have spent. Also, after every election, they are supposed to give us an account of what they spent in that particular election. Supposing assembly election has taken place, we have contested, we have spent so much. And we publish it on the website of the Commission for everybody to know what is happening. And this we have now made digital. But the unaccounted money which is used in the elections,
on which during the elections we are very particular to control it. But how do we also control the donations in the unaccounted form is something which the entire nation has to work together. How the donors' privacy is also protected. He is not harassed. How it is channelized. How it is more and more white. In the digital age, there must be almost no scope. It must be a very, very less cash economy. I am speaking from my old finance days, but it must be very, very less cash economy, and therefore one has to think of it, and I am sure some better system will evolve where it becomes like that. Yes. So should we take Last another round? Yes, Last round. Last round of questions. The lady at the back. Yeah. Good evening, sir. This is Ritika from the Indian Express. You're not audible. Yeah. Sorry. Good evening, sir. This is Ritika Chopra from the Indian Express. I have a question regarding Manipur. There's been this huge displacement of people on account of the ethnic strife. There are people who've been displaced living in relief camps and haven't come back home. What steps are is the Commission taking to ensure that people actually turn out to vote in their respective constituencies? And secondly, sir, as far as the disclosure of data with regard to electoral bonds is concerned, was the Commission expecting SBI to also share data pertaining to the unique bond number? Because what you got was just date of purchase, name and amount, and party name, date of redemption and amount. Can you introduce yourself? This is Ritika Chopra from the Indian Express. Thank you. Okay. The gentleman in that orange shirt there. Yeah, please. मैं कृष्ण मोहन शर्मा भारत एक्सप्रेस से मेरे दो सवाल हैं जिस मुहिम में आप लगे हुए हैं कि वोटिंग परसेंटेज बढ़े। To one question. We don't have time. सिंपल क्वेश्चन। एक क्वेश्चन सर कि क्या वो समय आएगा हमारे देश में कि 12वीं का बच्चा जब पास हो तो उसको साथ साथ वोटर आई कार्ड मिल जाएगा? और दूसरा सवाल एक ये है कि क्या हमारे देश में मैंडेटरी वोटिंग हो पाएगी कभी? The lady in the light blue shirt, last row. Yeah. Sir, this side Harsha from Republic TV. I have two questions. First one, opposition parties have accused Election Commission of being biased when it comes to action against hate speeches. While you have said that adequate measures have been taken, but how is it different from the last time? And the second question is precisely about two states, West Bengal and Manipur. Both these states have witnessed immense violence last year. One during Panchayat election and other one with ethnic clashes. How Election Commission is ensuring safe and peaceful election in the booths this time? Okay, the gentleman in the front. Idhar rahe ji. Here, I'm George Kaliwari from Deepika Malayalam Daily. Mine is a half question and a request also. No, there are. Why can't you think of giving? Giving a ballot vote. Voting for journalists who work in other. Go for vote reporting. Like me, I lost at least 5 parliament elections because I was covering the elections in the north. My vote is in Kerala. The gentleman in the orange shirt, that's the last question. Piche. Last but one row mein hai. That's the last question. Coming. Yes. संजय शर्मा आज तक से हूँ मैं। मेरा एक सवाल तो ये है कि निर्वाचन आयोग ने बहुत मार्मिक और बहुत व्यावहारिक अपील की है राजनेताओं से कि वो नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलें। तो इसकी कितनी अपील का असर लग रहा है कि वो कर पाएंगे? और दूसरा ये कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स में अगली स्कीम किस तरह से इसको और पारदर्शी बनाया जा सकता है? क्या आयोग के पास भी ऐसा कोई इंतजाम है क्या? Yes. Now, उनका भी एक ले लीजिए उनका भी। उनको दे दीजिए। Give it time. लीजिए। You can't do that. लीजिए। I am Professor T.S. Agrawal and I am a nominee of राष्ट्रपति 2012. उस समय मैंने प्रणब मुखर्जी का नॉमिनेशन कैंसिल कराया था। तब ये प्रॉमिस किया था, सवाल है, तब ये प्रॉमिस किया था कि एमपीज की जगह वोटर
प्रपोजर होंगे, आपने अभी तक अमेंडमेंट नहीं किया। दूसरी बात यह है कि आप जो डीएम होता है, मैं बनारसी चुनाव लड़ा, उसने 3 बार मेरा इलेक्शन नॉमिनेशन कैंसिल कर दिया बायस, लेकिन मैंने चौथी बार पास कराया। तो डीएम को आप इतनी पावर देंगे कि किसी का भी नॉमिनेशन कैंसिल कर देगा बैलेट को, या आप अमेंडमेंट करिए और इसमें अमेंडमेंट करिए। और ये जो खड़े होते हैं ऐसे लोगों को मत होने दीजिए कि बायस करते हैं। ऐसे आप नहीं बोल सकते, नहीं ऐसे नहीं बोल सकते, ये इस तरीके की चीज आप यहाँ नहीं बोल सकते। अच्छा ठीक है, नाउ लेट मी टेक दीज क्वेश्चंस। 12वीं क्लास के बच्चे के बारे में आपने पूछा एक प्रश्न। 12वीं क्लास के बच्चे को जैसे ही उसकी एज पूरी हो उसको वोटर कार्ड मिल जाए, इसकी तैयारी हम कर रहे हैं, एडवांस एप्लीकेशन लेके, ऐसा जरूर होना चाहिए। अबाउट मणिपुर, question was asked about Manipur, what we will do. There are persons who are displaced, who are in the camps. We have drawn a scheme. We have drawn a scheme which we have notified. That scheme is notified to allow the voters in the camp to vote from the camp. जैसे माइग्रेंट्स के लिए J&K में वो स्कीम है, ऐसे ही यहाँ पर भी उस स्कीम को लागू किया गया है, एंड द वोटर्स वुड बी अलाउड इन द रेस्पेक्टिव कैंप्स फ्रॉम द लोअर कॉन्स्टिट्यूएंसी टू द हायर एंड हायर टू द लोअर. बट माई अपील to the voters is that let us decide through the ballot peacefully by participating in these elections. We'll make the arrangements. So postal ballot तो अवेलेबल है प्रेस को, हम इशू कर सकते हैं, ये हम उपलब्ध कराएंगे. चलिए, thank you very much. Thank you, sir. That brings us to the end of this press conference. I would like to thank EC administration, PIB, protocol, and Vigyan Bhavan team for the excellent arrangements. Thank you, sir. In the last 26 days, what extent of matching has been done by you? What steps have you taken in the last 26 days? The application is absolutely silent on that. We direct that ECI shall compile the information and publish the details in its official website by 5 p.m. on 15 March 2024. SBI does not comply with the directions of this court by a judgment dated 15 February 2024. This court declared the electoral bond scheme and the provisions of the Finance Act 2017, which amended the provisions of the Representation of the People Act 1951 and the Income Tax Act 1961 unconstitutional. That the non-disclosure of information regarding the funding of political parties is violative of the right to information of citizens under Article 19, bracket 1, bracket A of the Constitution. Stop. The amendments which were introduced by the
Finance Act 2017 to the provisions of the Companies Act 2013, permitting unlimited funding of political parties by corporate entities were held to be arbitrary and violative of Article 14 of the Constitution. Full stop. Next para. In order to give full effect to the judgment which was rendered by the Constitution bench, this court directed the State Bank of India, footnote SBI, which was the authorized bank to deal with electoral bonds under the electoral bond scheme, to submit details of the electoral bonds purchased by the contributors and redeemed by political parties between April 2019, into brackets, the date on which an interim order was passed by this court directing the Election Commission of India, footnote ECI, to collect details of the contributions, bracket, till 15 February 2024, bracket, the date of the judgment, full stop. This court directed SBI to submit the following details by 6 March 2024 to the ECI. A. Details of each electoral bond purchased, including the date of purchase, the name of the purchaser, and the denomination of the electoral bond, semicolon, and B. Details of each electoral bond redeemed by political parties, including the date of encashment and the denomination of the electoral bond. Stop. The ECI was directed to collate the information which was to be submitted by the SBI and publish it on its website by 13 March 2024. Full stop. The directions of this court are extracted below, colon, आप copy कर लीजिए, para 219 at page 76. Para Lord, it's 221, page 76 of the application. The SCC has a, all right, आप ऐसा कर लीजिए, ये पैरा ऐसा है 219, 221 जो भी आप ले लीजिए. It may be on SCC online, it's 221. The para begins with the words, in view of our discussion above. Yeah, yes. Okay, the following directions are issued, and the last word which you will copy down is the purchaser's account. Okay. SBI filed a miscellaneous application before this court 2 days before the expiry of the deadline, seeking an extension of time until 30 June 2024 for complying with the directions. Stop. The petitioners
before this court, dash, Association for Democratic Reforms, and the Communist Party of India, bracket, Marxist, bracket, dash, instituted contempt proceedings, instituted a petition invoking the contempt jurisdiction of this court against SBI for an alleged willful disobedience of the order of this court. Stop. In support of the application by SBI, I've heard Mr. Harish N. Salve, Learned Senior Counsel. Let's stop. Mr. Salve submitted that the information which was received by the SBI was maintained in two separate silos and were maintained with the utmost secrecy so as to fulfill the core purpose of the electoral bond scheme. Stop. Learned Counsel submitted that if the disclosure is to be made of the information required to be submitted by SBI to ECI in the separate silos which are referred to in B and C of the operative directions, there would be no difficulty in SBI doing so, which, it has been indicated, would be completed within 3 weeks. However, it has been submitted that the difficulty of SBI arose since it construed the directions of this court in requiring it to carry out a matching exercise to match the donor details, the donor and bond details with the corresponding details pertaining to encashment by political parties. Full stop. While evaluating the submission which has been made on behalf of SBI, a reference to some of the key aspects of the scheme would be in order at this stage. Let's stop. Clause 7, bracket 4 of the electoral bond scheme stipulates that the information furnished by the buyer of an electoral bond shall be treated as confidential by the authorized bank and shall be disclosed only when called upon to do so by a competent court or upon the registration of an offense by law enforcement agency. Let's start. Thus, in terms of the provisions of the electoral bond scheme itself, SBI is mandated to disclose information when demanded by a court. Let's stop. What remains to be seen, what has to be analyzed is whether SBI is justified in seeking an extension of time. Next. SBI seeks an extension of time on the ground that the process of
open inverted commas, decoding the electoral bonds and matching the donor to the donations into inverted commas complete. A complex and time-consuming exercise. Stop. To substantiate this argument, SBI has a word that colon, next line, A, information is not available in a digital format. ये underline कर दीजिए. Clause 7.1.2 of the standard operating procedure regarding the sale and redemption of electoral bonds stipulates that, into invert commas, no details of bond purchaser, including KYC and other details, will be entered in the core banking system, into invert commas complete. Comma. The details of the purchases of bonds are not available centrally, semicolon. B, the donor details and recipient details are available in two separate silos. ये underline कर लीजिए, colon. The details of the purchasers of the electoral bonds were kept in a sealed cover at the designated branch. These sealed covers were deposited in the main branch of SBI in Mumbai at the end of each phase of the issuance of the electoral bonds. Stop. The information on the redemption of electoral bonds, into brackets, that is the original bond and the pay-in slip, bracket, were stored in a sealed cover and sent to the SBI, Mumbai branch. Semicolon. C. Matching of information in the two silos is a time-consuming process. Underline कर लीजिए, colon. The matching of the information on the purchase and redemption of electoral bonds would be time-consuming since donor information and redemption information is maintained in two distinct silos independent of each other, semicolon. D, there is a large there is a large number of data sets to decipher, underline, colon. A total of 22,000 odd, एक second, I'll give you the figure. 22,217. A total of 22,217 bonds were purchased between 12 April 2019 and 15 February 2024. Full stop. This would cumulatively add up to 44,434 data sets, since there are two silos of information. In other words, comma, the compilation of this information would be a time-consuming process. Full stop. Next main para. The crux of the submission of the SBI is that the matching of information to ascertain who contributed to which political party
is a time-consuming process since the information is maintained in two separate silos. Full stop. Now, the operative directions which have been issued by this court as reproduced earlier the operative directions of this court directed the SBI to disclose the transactions as set out in direction B and direction C extracted above. Let's stop. SBI submits in its application itself that the donor details and redemption details are available, comma, albeit in separate silos. Full stop. In other words, the directions which have been issued by this court require SBI to disclose information which is already available to it. Next para. At this stage, it would be material to refer to the FAQs on electoral bonds published by the SBI, which states that the Know Your Customer documents must be submitted by the purchaser each time that the bond is purchased, irrespective of whether the purchaser has a KYC verified SBI account. Full stop. That is, वहाँ फुटनोट दे दीजिए और उसको FAQ क्वेश्चन नंबर 16 जजमेंट से मैं आपको बाद में बताता हूँ कहाँ से लेना है आपको. That is one set of documents, into brackets, the electoral bond application form, KYC documents, and pay-in slip. Can, bracket complete, can only be used to purchase one electoral bond. Full stop. Contributors who have an SBI account, as well as those who do not, have to submit the electoral bond application, Know Your Customer documentation, and proof of payment through NEFT, check, or demand draft. Full stop. Thus, the details of the electoral bonds which have been purchased and which have been directed to be disclosed by this court are readily available. Next. The FAQ, similarly, the FAQs on electoral bonds published by the SBI with respect to the redemption of bonds states that each political party can only open one current account for electoral bond redemption. Full stop. The current account could be opened by the political party only in 4 authorized branches in Chennai, Kolkata, Mumbai, and New Delhi. Full stop. There are 29, factually, nothing turns on that. All right. 29 designated branches. 29 designated branches. Yes. Full stop. They're in the 4 cities or other places also? No, all over the country. All over the country, madam. Not in these 4 places.
Thus, information about a political party's encashment of electoral bonds would be stored only in these branches, which would be clearly accessible. Stop. Slips and other details would have to be, submitted to the main branch. Full stop. There is no dispute about the fact, as there cannot be, that this process was duly followed. Stop. Together with the application which has been filed by SBI for the extension of time, ADR has filed a contempt petition in which it submits that the information which was directly to be disclosed by this court can easily be disclosed by SBI because of the unique number which is printed on the electoral bond. Full stop. Irrespective of whether the unique identification number, which is not discernible to the naked eye, will enable the disclosure of details, the submissions of SBI in the application sufficiently indicate that the information which has been directed to be disclosed by the court is readily available. Next. In view of the above discussion, the miscellaneous application filed by SBI seeking an extension of time for the disclosure of details of the purchase and redemption of electoral bonds until 30 June 2024 is dismissed. Full stop. SBI is directed to disclose the details, the close of business hours, 12 March 2024. Full stop. As regards the ECI, we direct that ECI shall compile the information and publish the details in its official website no later than by by 15 March, by 5 p.m. on 15 March 2024. Full stop. During the pendency of the proceedings before the Constitution Bench, ECI had, in compliance with the interim orders passed by this court, filed its statements which have been maintained in the custody of the court. Full stop. Copies of the statements which were filed by ECI before this court would be maintained in the office of the ECI. Full stop. ECI shall publish the details of the information which was supplied to this court in pursuance of the interim orders on its website. Full stop. The miscellaneous application
SBI shall file an affidavit of its chairman and managing director on compliance with the directions which have been issued above. Stop. While we are not inclined to exercise the contempt jurisdiction at this stage, bearing in mind the application which was submitted for extension of time, we place SBI on notice that this court may be inclined to proceed against it for full disobedience of the judgment if SBI does not comply with the directions of this court as set out in its judgment dated 15 February 2024 by the timelines indicated in this order. Full stop. The miscellaneous application for extension of time shall accordingly stand dismissed. Contempt petitions shall stand disposed of at this stage in the above terms. My Lord, I just want to say one thing, my Lord, because I don't want tomorrow to be again at the end of Mr. Prashant Bhushan's contempt. Your Lordships have said disclose B and disclose C. The directions, we will disclose both of that, that is easy. Correlating the purchase with the beneficiary is not something which we are required to do, then it's easy. That will, so when my Lord the Chief Justice dictated the order, it is very clear that there is no scope for any confusion in the what is dictated in the court. Lordship. And your Lordship had said that the reason E and C of your Lordship's original. I'm not appearing, I'm assisting. I feel, my Lord, SBI needs to be. The order of this court, the judgment of the Constitution bench required SBI to furnish to the ECI all details of the electoral bonds purchased and as the case may be purchased or as the case may be redeemed by political parties, including the date of purchase. What are the other? Yes, date of purchase, name of purchase, name of purchaser, purchase which have received, and the denomination. Date of purchase, name of the purchaser, and the date of purchase stroke redemption. Full stop. It has been pointed out, it has been submitted that SBI has not disclosed the electoral bond electoral bond number. What is it called? Is it called the unique identification number, or is it called the unique alphanumeric number on each bond? The alphanumeric number of the electoral bonds. Full stop. The Solicitor General submits that since he is not appearing for the SBI, a notice may be issued to SBI. Full stop. We direct the registry to issue notice to SBI, returnable on Monday. Keep it on Monday. Keep your plans. A copy. My Lord, may I mention, my Lord? Mr. Agarwal, just a moment. Don't interfere. A copy of this order shall be forwarded by the Registrar Judicial on the Standing Counsel appearing for SBI. May I request, my Lord, one thing? Mr. Kapoor. Sanjay Kapoor. Lord, may I request? Your Lordships are keeping this on Monday. We are guests among us. This mentioning can wait, my Lord, till Monday. I hope, my Lord, I can convey myself. There we agree with us. There is something to be said for both the solicitors. Mr. Agarwal, would you like to mention this? My Lord, I sent yesterday one request to Honorable Lordship for sumoto. Credit us with reading our files and correspondence both. Would you like to mention this on Monday, Mr. Agarwal? But there's a request Lordship is fully aware. All of us to request it. We join
time. Your lordship may permit me to file for application, but I was not a party, my lord. Please respect the sentiments of your colleagues. All of us are jointly requesting you to mention on Monday. Keep them, guys. Great, great. Obliged. Maintained in the custody of this court. But stop. While issuing this direction, the court had presumed that A copy of the data which was lodged before this court, before the registry of this court, would be available with the ECI. Mr. Amit Sharma, learned counsel appearing on behalf of ECI states that as a matter of fact, ECI did not retain any copy of the data which was collated by it, since it was being placed before this court in sealed custody. The request, therefore, of the ECI is that the data which has been filed in this court may be returned to it, so as to enable it to comply with the order of this court for uploading all the documents. Full stop. This request of the ECI has not been opposed either by Mr. Atul Sipal or then senior counsel or Mr. Prashant Bhushan, learned counsel. Mr. Vijay Hansai, I will be sure. Full stop. We accordingly issue the following directions: (bracket 1). The Registrar Judicial of this court shall ensure that that the data which has been filed by ECI in pursuance of the interim orders of this court is scanned and digitized. Full stop. On the process being complete, this may be preferably carried out during the first. It may be carried by during the course of the day tomorrow, by 5 p.m. tomorrow. Full stop. Once the above exercise is completed, the original shall be returned to Mr. Amit Sharma, then counsel appearing on behalf of the ECI. Full stop. ECI shall then upload the data on its website within a period of on or before, day after. A copy of the digitized may also be given, Lord, so it will not take time and A copy of the, yes, fair enough. A copy of the scanned and digitized files shall also be made available to Mr. Amit Sharma so as to obviate the replication of the process of scanning and digitization. So now we'll pass another order. would your lordships consider issuing notice to SBI? They may have something to say. They should be here when the matter is going on. I'm sorry, my lord. Please. They filed an application which is disposed of. They are not parties. But really speaking, we can take exception to what they have disclosed because they were duty bound. I'm not appearing for SBI. The court can pass an order. Lordships may hear. I'm not here, my lord, for political. What is the operative direction in clause? My lord, may I mention, my lord? Here it is. It says SBI shall submit details of the electoral bonds purchased Since the interim order of the court dated 12th February till date to the ECI. The details shall include the date of the purchase of each electoral bond, the name of the purchaser of the bond, and the denomination of the electoral bond purchase. Shall include. It doesn't mean it will exclude. SBI, your lordship's order is clear what your lordship's meant. Allow me, sir. Allow me. SBI shall submit the details of political parties which have received contributions to electoral bonds since the interim order of the court dated 12th April to the date of the ECI. SBI must disclose details of each electoral bond, details encashed by political parties, which shall include the date of the encashment and the denomination of the bond. So this is an inclusive order. It shall include all details. So would your lordships see BNC. And your lordship had said that the reason BNC of your lordship's original. I'm not appearing. I'm assisting. I feel my lord SBI needs to be. The order of this court
required SBI to furnish to the ECI all details of the electoral bonds purchased and as the case may be purchased or as the case may be redeemed by political parties, including the date of purchase. What is the other? Yes, date of purchase. Name of purchase. Name of purchaser. Purchase which have received. Sorry. And the denomination. Date of purchase. Name of purchaser. And the date of purchase stroke redemption. Full stop. It has been pointed out, it has been submitted that SBI has not disclosed the electoral bond electoral bond number. What is it called? Is it called the unique identification number, or is it called the unique alphanumeric number on each bond? The alphanumeric number of the electoral bonds. Full stop. The Solicitor General submits that since he is not appearing for the SBI, notice may be issued to SBI. Full stop. We direct the registry to issue notice to SBI, returnable on Monday. Keep it on Monday. Keep your class. A copy. My lord, may I mention, my lord? Mr. Agarwal, just a moment. Don't interfere. A copy of this order shall be forwarded by the Registrar Judicial on the Standing Council appearing for SBI. May I request, my lord, one thing? Mr. Kapoor. Sanjay Kapoor. Lord, may I request? Your lordships are keeping this on Monday. We are guests among us. This mentioning can wait, my lord, till Monday. I hope, my lord, I can convey myself. There we agree with us. There is something to be said for what the solicitor said. Mr. Agarwal, would you like to mention this? My lord, I sent yesterday one request to Honorable Lordship for Sumoto. Credit us with reading our files and correspondence both. Would you like to mention this on Monday, Mr. Agarwal? Lordship is fully aware. All of us will request it. Join Lordship may permit me to file for application. But I was not a party, my lord. Please respect the sentiments of your colleagues. All of us are jointly requesting you to mention on Monday. Keep your guys. Great. Right. Maintained in the custody of this court. While issuing this direction, the court had presumed that a copy of the data which was lodged before this court, before the registry of this court, would be available with the ECI. Mr. Amit Sharma, learned counsel appearing on behalf of ECI states that as a matter of fact, ECI did not retain any copy of the data which was collated by it, since it was being placed before this court in sealed custody. The request, therefore, of the ECI is that the data which has been filed in this court may be returned to it, so as to enable it to comply with the order of this court for uploading all the documents. This request of the ECI has not been opposed either by Mr. Atul Sipal or the Senior Counsel or Mr. Prashant Bhushan, Learned Counsel. Mr. Vijay Hansaya will be shown. We accordingly issue the following directions. (1) The Registrar Judicial of this court shall ensure that the data which has been filed by ECI in pursuance of the interim orders of this court is scanned and digitized. Upon the process being complete, this may be preferably carried out during the first. It may be carried by during the course of the day tomorrow, by 5 p.m. tomorrow.
once this exercise 2, once the above exercise is completed, the original shall be returned to Mr. Amit Sharma, then counsel appearing on behalf of the PCI. Full stop. PCI shall then upload the data on its website within a period of on or before, day after, day after. But a copy of the digitized may also be given, Lord, so it will not take time in. A copy of the, yes, fair enough. A copy of the scanned and digitized files shall also be made available to Mr. Amit Sharma so as to obviate the replication of the process of scanning and digitization. So now we'll pass another order. Would your lordships consider issuing notice to SBI? They may have something to say. They should be here when the matter is going on. I'm sorry, my lord. Please. They filed an application which is disposed of. They are not parties. But really speaking, we can take exception to what they have disclosed because they were duty bound. I'm not appearing for SBI. What can pass an order? Lordships may hear. I'm not here, my lord, for political. What is the operative direction in clause? My lord, may I mention, my lord? Here it is. It says SBI shall submit details of the electoral bonds purchased Since the interim order on the 4th February till date to the ECI. The details shall include the date of the purchase of each electoral bond, the name of the purchaser of the bond, and the denomination of the electoral bond purchase. Shall include, doesn't mean it will exclude. SBI, your lordships, order is clear what your lordships meant. Allow me, sir. Allow me. SBI shall submit the details of political parties which have received contributions to electoral bonds since the interim order of the court dated 12th April till the date of the ECI. SBI must disclose details of each electoral bond, details encashed by political parties, which shall include the date of the encashment and the denomination of the bond. So this is an inclusive order. It shall include all details. So would your lordships see BNC. And your lordship had said that the reason B and C of your lordship's original. I'm not appearing. I'm assisting. I feel my lord SBI needs to be. Order of this court, the judgment of the Constitution bench required SBI to furnish to the ECI all details of the electoral bonds purchased and as the case may be purchased or as the case may be redeemed by political parties, including the date of purchase. What are the other? Yes, date of purchase, name of purchase, name of purchaser, purchase which have received. And the denomination. Date of purchase, name of the purchaser. And the date of purchase stroke redemption. Full stop. It has been pointed out, it has been submitted that SBI has not disclosed the electoral bond electoral bond numbers. What is it called? Is it called the unique identification number, or is it called the unique alphanumeric number on each bond? The alphanumeric number of the electoral bonds. Full stop. The Solicitor General submits that since he is not appearing for the SBI, a notice may be issued to SBI. Full stop. We direct the registry to issue notice to SBI, returnable on Monday. Keep it on Monday. Keep your class. A copy. My lord, may I mention, my lord? Mr. Agarwal, just a moment. Don't interfere. A copy of this order shall be forwarded by the Registrar Judicial on the Standing Council appearing for SBI. May I request, my lord, one thing? Mr. Kapoor. Sanjay Kapoor. Lord, may I request, your lordships are keeping this on Monday. We are guests among us. This mentioning can wait, my lord, till Monday. I hope, my lord, I can convey myself. There we agree with us. There is something to be said for what the solicitor said. Lord,
Mr. Agarwal, would you like to mention this on Yeah, Monday? my lord, I sent yesterday one request to Honorable Lordship Credit us for with Sumoto. Credit us with reading our files and correspondence both. Would you like to mention this on Monday, Mr. Agarwal? But I would request Lordship is fully aware. All of us will request it as well. We join this. Lordship may permit me to file for application. But I was not a party, my lord. Please respect the sentiments of your colleagues. All of us are jointly requesting you to mention on Monday. Please be obliged. Great kindness. Obliged. Maintained in the custody of this court. Full stop. While issuing this direction, the court had presumed that A copy of the data which was lodged before this court, before the registry of this court, would be available with the ECI. Mr. Amit Sharma, learned counsel appearing on behalf of ECI states that as a matter of fact, ECI did not retain any copy of the data which was collated by it, since it was being placed before this court in sealed custody. The request, therefore, of the ECI is that the data which has been filed in this court may be returned to it, so as to enable it to comply with the order of this court for uploading all the documents. Full stop. This request of the ECI has not been opposed either by Mr. Kapil Sibal or the Senior Counsel or Mr. Prashant Bhushan, Learned Counsel. Mr. Vijay Hansari, I will just full stop. We accordingly issue the following directions: (1) the Registrar Judicial of this court shall ensure that that the data which has been filed by ECI in pursuance of the interim orders of this court is scanned and digitized. Full stop. Upon the process being complete, this may be preferably carried out during the first. It may be carried by during the course of the day by 5 p.m. tomorrow. Full stop. Once the above exercise is completed, the original shall be returned to Mr. Amit Sharma, the counsel appearing on behalf of the ECI. Full stop. ECI shall then upload the data on its website within a period of on or before, day after. Like a copy of the digitized may also be given, so it will not take time in. A copy of the, yes, fair enough. A copy of the scanned and digitized files shall also be made available to Mr. Amit Sharma so as to obviate the replication of the process of scanning and digitization. So now we'll pass another order. We'll say, would your lordships consider issuing notice to SBI? They may have something to say. By the way, they should be here when the matter is going on. I'm sorry, my lord. Please. They filed an application which is disposed of. They are not parties. But really speaking, we can take exception to what they have disclosed because they were duty bound. I'm not appearing for SBI. The court can pass an order. Lordships may hear. I'm not here, my lord, for politics. What is the operative direction in clause? My lord, may I mention, my lord? Here it is. It says SBI shall submit details of the electoral bonds purchased Since the interim order of the court dated 12th February till date to the ECI. The details shall include the date of the purchase of each electoral bond, the name of the purchaser of the bond, and the denomination of the electoral bond purchase. Shall include. It doesn't mean it will exclude. SBI, your lordships, what is clear? What your lordships meant? Allow me, sir. Allow me. SBI shall submit the details of political parties which have received contributions to electoral bonds since the interim order of the court dated 12th April till the date of the ECI. SBI must disclose details of each electoral bond. It is encashed by political parties, which shall include the date of the encashment and the denomination of the bond. So
this is an inclusive order, it shall include all details. Lords, would your lordships see BNC? BNC. And your lordship had Your said lordship, that the reason. E and C of your lordship's original. I'm not appearing, but I'm assisting. I feel my lord SBI needs to be. The order of this court, the judgment of the Constitution bench required SBI to furnish to the ECI all details of the electoral bonds purchased and as the case may be purchased or as the case may be redeemed by political parties, including the date of purchase. What are the other? Yes, date of purchase, name of purchase, name of purchaser, purchase which have received, and the denomination. Date of purchase, name of the purchaser, and the date of purchase stroke redemption. Full stop. It has been pointed out, it has been submitted that SBI has not disclosed the electoral bond electoral bond numbers. What is it called? Is it called the unique identification number, or is it called the unique alphanumeric number on each bond? The alphanumeric number of the electoral bonds. Full stop. The solicitor submits that since he is not appearing for the SBI, a notice may be issued to SBI. Full stop. We direct the registry to issue notice to SBI, returnable on Monday. Keep it on Monday. Keep your class. A copy. My lord, may I mention, my lord? Mr. Agarwal, just a moment. Don't interfere. A copy of this order shall be forwarded by the Registrar Judicial on the Standing Council appearing for SBI. May I request, my lord, one thing? Mr. Kapoor. Sanjay Kapoor. Lord, may I request? Your lordships are keeping this on Monday. We are guests among us. This mentioning can wait, my lord, till Monday. I hope, my lord, I can convey myself. There we agree with us. There is something to be said for what the solicitor said. Mr. Agarwal, would you like to mention this? My lord, I sent yesterday one request to Honorable Lordship for Sumoto. Credit us with reading our files and correspondence both. Would you like to mention this on Monday, Mr. Agarwal? But I would request Lordship is fully aware. All of us should request it as well. We join. Lordship may permit me to file for application, but I was not a party, my lord. Please respect the sentiments of your colleagues. All of us are jointly requesting you to mention on Monday. Keep your guys. Great. Right.